in the Northeast and Assam. It's curious that the medal tally sometimes stops at the borders of Assam. Now, he is a member of parliament for Kuch Bihar, which is a bordering state of Bengal, which is bordering state of Assam. I would like to ask him why the facilities which were there for the Northeast somehow that doesn't get translated further eastwards, despite the fact that it is alleged that the state government gives generous grants to youth clubs. Are these for sports, and are you complementing their efforts? This is the question I'd like to ask. Thank you. माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर एक जो क्षेत्र है, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर एक क्षेत्र में खेल के विकास के लिए उनका जो सोच है, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने 2021 का अक्टूबर में एक वर्चुअल मीटिंग रखा था जिसमें सारे प्रदेशों की जो खेल मंत्री है उनके पास से सुझाव मांगा गया था कि किस तरह से हम आपकी प्रदेश में आपका सुझाव क्या है और प्रपोजल भी क्या है, किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे जाके खेल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। महोदय, इसमें लगभग सारे जो स्टेट्स है, सारे राज्यों ने अपना अपना जो प्रपोजल है, अपना अपना जो सुझाव है वो खेल मंत्रालय को दिया है। लेकिन महोदय, दुख की बात यह है कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अभी तक कोई भी प्रकार का प्रपोजल अभी तक नहीं आया है। महोदय, अगर आएगा तो इस पर विचार करें। थैंक यू। श्री सुजीत कुमार जी। Sir, in 2019, the government had sanctioned 110 crore to set up the National Center for Sports Science and Research. And the objective was to promote scientific methodology in the development and enhancement of sports infrastructure in the country. Sir, I would like the Honourable Minister to apprise the House what is the status of this institution and by when is it likely to be completed. Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उसके लिए मंत्रालय काम चल रहा है इसका, और उसके लिए उचित समय पर विचार महोदय किया जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर वी शिवदास। Improve the infrastructure facilities in educational institutions in rural area. Whether government has any concrete plan to improve sports infrastructure facilities in educational institutions in rural India? Thank you. महोदय, ऐसी बहुत सारी जो है कि खेलो इंडिया के तहत हम लोगों का विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल का विकास करने के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है, और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारा स्कीम है जिससे विद्यालय का भी जो खेल परिवेश है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17, ऑनरेबल श्री एमबी श्रेयांश कुमार, प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माइक श्रेयांश कुमार जी, माइक प्लीज। सी लॉबी नंबर 4. Yes, it's working. So thank you. Please speak. So how many Gulf Indian workers benefited from the Indian mission? So Indian mission consulted efforts for settling the pending salaries and allowances of expatriates who had returned home due to COVID pandemic situations. So we don't have exact number of exact figure for the workers whose salaries are pending, but I wish to assure the member through you that today retaining employment, ensuring that wages are paid, ensuring welfare of workers, these have been very much the priority of our missions in the Gulf. From the highest level, we have been engaged
on this matter, and we have been regularly talking to the governments of the Gulf at my level and at the ambassador's level. Thank you. Second supplementary. Sir, to a specific question about the representation from Kerala state, nothing has been mentioned. But, sir, how much of Indian mission abroad spent during the last 2 years to assist and facilitate the non-resident Indians who suffer in foreign countries due to COVID situation? Indian Community Welfare Fund, during the COVID period, we spent 45.78 crores for the welfare of our citizens, mostly workers in the Gulf, during this period of the COVID. Honorable KJ Alphonse. Kerala survives on remittances from our workers abroad, and I think over 25% of entire remittance to India, foreign exchange remittance to India also comes from Kerala. So we have over 500,000 Keralites have come back. Now, I don't find it feasible for the government of Kerala to rehabilitate these people because there are no employment opportunities in Kerala. I would like to know from the Honourable Minister, what is the steps taken by the government of India to get these people back to those countries so that they can get back to job? Thank you. Sir, I would like to inform the Honourable Member that we have engaged the governments of the Gulf. This engagement is led by the Prime Minister himself. In the course of the last 2 years, during the COVID period, Prime Minister has had 16 telephonic conversations with his counterparts, the leaders of the Gulf countries. I have visited the Gulf countries 13 times during this period. My colleague Muralidharan ji has been there 4 times. I have also had 27 telephonic meetings with our colleagues. Our objective is to get as many workers back there as possible, as many of them back in their old jobs. We have in Dubai also started an upskilling center for workers, and we are all the missions treat the welfare of workers as their #1 priority. Thank you. Honorable Elam Karim ji. Whether the government may bring a scheme for providing financial assistance to the families of deceased NRIs on abroad due to COVID? So we have a provision in the Indian Community Welfare Fund for responding immediately to situations, especially unfortunate situations like the passing away of people, which this usage of ICWF was expanded in 2017, and it has been a very useful mechanism for dealing with that. We have also encouraged in the Gulf countries, wherever we have had such unfortunate occurrences, for ex gratia payments to be made by the government or by the employers. Thank you. Sri Vinay Vishwamji. Sir, I may ask the Minister that whether there is a proposal or there is a possibility to see that somebody in the Indian missions abroad, in Gulf countries mainly, with Malayalam knowledge, be appointed to interact with the Malayali workers there, because there are large numbers. They face a lot of problems. They know only Malayalam, and their issues are so severe. Please question briefly. My question is there should be somebody in all missions in Gulf countries who can treat these poor Malayali workers with Malayalam language. It's a suggestion. Yes. The Minister. Whether they can do it or not. Please. Sir, first of all, I would like to underline to the Honourable Member that we have workers from many states. I do appreciate that a very large number of them are from Kerala, but there are workers from other states as well. In terms of what are the language skills of our staff, I cannot give him the exact number, but I can assure him that this common sense point that our employees, somewhere in an embassy, there should be employees who have knowledge of Malayalam. That is a point that has not escaped us, and we do find ways of dealing with that. Thank you. Question number 18, Honorable Sri John Brittas. Please. Sri John Brittas, not present. Mr. John Brittas? No. Minister? Honorable Minister? It is laid on the table of the House.
First supplementary, Sri Prasanna Acharya ji. Sir, though it is a question regarding the appointment of women judges, my supplementary is regarding the total vacancies that is now prevailing in different high courts and Supreme Court in the country, and how many recommendations have already been made by the collegium, and that is pending with the government, and in spite of the recommendation of the collegium, judges are not being appointed. And sir, I think India is the only democratic country where the people's representatives decide their own salary. Of course, now the MP salary system has been changed, and the judges appoint their own successor. So, is the government considering to again bring any amendment in the law to suggest an alternative to the collegium system? Thank you, so that there will be transparency. Thank you. You have put three questions. Judges. You have put three questions, please. Sir, at this moment, we are very happy that out of the total 34 judges strength in the Supreme Court, we have, for the first time, 4 women judges in the Supreme Court, and 3 women judges were appointed when I took over as the Minister for Law and Justice. Sir, out of total 1,098 judges in the High Courts, we have 83 women judges. I can give more explanation, but I would like to state only one thing, that we have been stressing time and again. Personally, I have been asking the collegium led by the Chief Justices of the Supreme Court and the High Courts that while recommending the names for the appointment as the judges, preferences may be given to women and backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Please, not allowed. Actually, he has put 3 questions. Yes, so but sir, if you permit, I can ask him to confine to one question, but still I will respond to the last point which he made. Government on its own deliberately never held up any appointment cases. Government has to do due diligence while appointing judges, because while appointing the judges, we have to ensure that he is fit to be a judge in the court. This is very important. And then all the cases which come to us has to follow through a process. Some of the names are with the collegium in the Supreme Court. Some of the names are with the government in different stages. And this is a process. And it's a well-established process as per the memorandum of procedure. And we don't make any delay on our part just because we don't want to make any kind of judgment on our own while appointing the process, but only to look after the issue of appointing only the qualified judges. Thank you. Sri N.R. Elango, please. Coming from the state of Tamil Nadu, I am very happy to know the reply made by the Minister, Honorable Minister, that in Tamil Nadu, out of 75 honorable judges, 13 are women judges, and that's Tamil Nadu. But it is agonizing to see that there are 0 women judges in 5 states. It is also agonizing that most of the time the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes persons, though very eminent, are deprived of their elevation. Apart from the reply that they are requesting... Please question. Apart from the question is, apart from requesting the high courts, what are all the concrete steps are being taken by the government to ensure that there are due representation by these classes? That's a question. Sir, I have partially mentioned in my earlier statement, there are no provisions of reservations for the appointment of judges in the judiciary. But still we keep insisting that while we are talking about appointing quality judges, at the same time, we have to also ensure that preferences are given for the appointment of women judges as well as people belonging to backward classes, including scheduled castes and scheduled tribes. Sri Ramnath Thakur, Lok Sabha, बैठकर बोले, रामनाथ जी. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट में महिलाओं और पिछड़े वर्ग और दलित लोगों की जज की संख्या कितनी है,
सर, मेरे पास पूरा देश का फिगर है और मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं पटना के लिए। पटना हाई कोर्ट का सर टोटल अप्रूव जो जजेस का स्ट्रेंथ है 53 है, 53, और इस वक्त वहां कोई वुमेन जजेस नहीं है। ये थोड़ा से दुख की बात है, इसलिए हमने वहां के चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा है कि जो अगले नाम आएंगे पटना हाई कोर्ट से, तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ा दिया जाए ताकि सरकार को वुमेन जजेस को अपॉइंट करने में मदद मिले। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 19 श्री राम सकल जी। क्वेश्चन नंबर 19 माननीय मंत्री जी मास्क उतार लीजिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय राम सकल। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में उत्तर में कहा है कि वर्तमान आकलन में पिछले आकलन अर्थात ISF 2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 1440 वर्ग किलोमीटर वृक्षारोपण और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर वन तथा वृक्षारोपण को मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्शाई गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये आंकड़े पेपर तक सीमित, और जिस प्रकार से सरकार का करोड़ों रुपया लगा करके मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश में खासकर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मिर्जापुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला मिर्जापुर वन कैमूर क्षेत्र जीव आता है। वहां भारत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वर्ष 16-17 सवाल संक्षिप्त हो राम सकल जी प्लीज। करोड़ों रुपए लगा करके 200 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण पौधारोपण कराया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से वहां के आदिवासी समाज के द्वारा SC/ST के पास पूरी जमीन जो वृक्षारोपण हुआ था वो कब्जा कर लिया गया। स्थानीय अधिकारी मिली भगत, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, इतना पैसा लगाकर जो वृक्षारोपण होता है उसके रखरखाव के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बढ़िया। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सवाल है, भारत में हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं, और जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके जहां पर भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा वृक्षारोपण है उसको इसके अंतर्गत अंकित किया जाता है और देश के फॉरेस्ट कवर का पूरी तरीके से मापन किया जाता है। और दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया के जो बढ़ने की बात है वो तथ्यों पे आधारित है, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। जहां तक जो माननीय सदस्य ने मूल विषय उठाया है कि कुछ जंगली क्षेत्रों से पेड़ के कटने का या कुछ जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के सफल नहीं होने का, मंत्रालय द्वारा उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी और बाकी पॉलिसी, राम सकल जी प्लीज आप बैठे पॉलिसी के माध्यम से एक संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। जहां तक आप कब्जा करने की बात कह रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ग्रीन वॉच पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। उसमें जितनी भी अंकित शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई विषय है तो आप संज्ञान में लाइए, निश्चित रूप से हम उस पर कदम उठाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री और ब्रीफली संक्षेप में पूछे। अभी आप जो आपने आंकड़े दिया 4-5 स्टेट का दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है इसमें। पूछिए क्वेश्चन तो। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सभी राज्यों का विश्लेषण, सभी राज्यों में जो फॉरेस्ट बढ़े हैं या जहां पे फॉरेस्ट कम हुए हैं उसको पूरी तरीके से रखा गया है। फॉरेस्ट जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो राज्यों के अंतर्गत होता है और इसलिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको संभालता है। आपका कोई उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर स्पेसिफिक विषय है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री GC चंद्रशेखर जी। Mike, sir, this is very important question. In Karnataka, Salumarada Timmaka, a 106-year-old notable environmentalist, Padma Award recipient, an inspiration to many, sir, who planted more than 8,000 trees in 65 years, raised 385 banyan trees on either side of the road between the Hulikal and Kadur to the stretch of 4 kilometers. She had faced health issues and many such people are finding difficulties
if there is any provision from the ministry to support such environmental activists. मंत्रालय के द्वारा पूर्व में भी एक लंबे समय से इको क्लब से लेकर अनेक पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा इस बात का विचार किया जा रहा है कि सभी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे विभिन्न स्कीमों के चलने के कारण कई बार एक व्यापक रूप से जो दृष्टिकोण है वो नहीं आ पाता है। लेकिन हम मंत्रालय के द्वारा भविष्य में भी ग्रीन इंडिया मिशन में सभी स्कीमों के कन्वर्जेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि संयुक्त रूप से इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन और जो लोग भी वृक्ष लगाने में सहायता देते हैं उनकी मदद ली जाए। मैं सांसदों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वृक्षारोपण ये हमारी आवश्यकता है, आपका भी सक्रिय सहयोग मिलेगा तो ये देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद मंत्री जी। डॉक्टर फौजिया खान जी, डॉक्टर फौजिया खान प्लीज। From Lok Sabha. हाँ प्लीज। Chairman sir, in the reply to the question it is said that the forest cover in India is 24.62%, when ideally it should be 33%, it is said. And the major expenditure heads, including the National Plan on Agroforestry Research, Afforestation Board, Forest Management, etc., have suffered a decline in this year's budget, sir. You have to put only one question, madam, and you have already put it. Please. I want to say that since the budget has declined, how is forest conservation going to be the essential part of the program for climate change? Since, sir, this has to be an integrated interdepartmental effort. Thank you. So what is the government going Thank to do? you, madam. You have to be brief. Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे फॉरेस्ट एरिया के कवर का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर 3 तरह का फॉरेस्ट है। एक सघन वन है, एक मॉडरेट है और एक नॉर्मल बंजर जो वन है वो हमारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हमारे को देश का जो ट्री कवर है जो 30% बढ़ाने का हमारा दुनिया के सामने भी लक्ष्य है, 33% करने का, उसका एक सबसे बड़ा समाधान है कि हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण और ट्री कवर की संख्या को और स्थिति को बढ़ाया जाए। जहां तक भारत में फॉरेस्ट की स्थिति का बात है, भारत में जो सघन वन है, हमारे फॉरेस्ट के अलग अलग तरह के प्रकार हैं। कहीं पर हमारे जो पर्यावरणीय और भौगोलिक अलग अलग विशेषता है, उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश के अंतर्गत है। सरकार के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से संरक्षित करने का, बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में फॉरेस्ट के अंतर्गत 52 हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जिसमें से आज भारत सरकार के सघन प्रयासों के कारण, पिछले 7 वर्षों के प्रयासों के कारण हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को उनकी अच्छी स्थिति के कारण इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी प्राप्त हुआ है और अभी दक्षिण के एक हमारे टाइगर रिजर्व को TY2 का भी दर्जा मिला है। लेकिन इन फॉरेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के कवर एरिया को बढ़ाने के लिए जो जल के जो हमारे क्षेत्र है, उनके आसपास भी सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष रूप से नर्मदा और उसके क्षेत्रों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान ले रही है और संज्ञान लेके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। श्री विकास महात्मे जी। मेरा सवाल ये है कि वी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस and how this revenue can be increased, and this is without decreasing the forest cover, so that forest cover remains but we get revenue from the forest. सर, माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके कारण जनजाति समाज के जो हमारे बंधु हैं, उन जनजाति समाज के बंधुओं की आय होती है। इसके लिए विभिन्न स्कीम और योजनाएं भी चलाते हैं और मैं यहाँ पर सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की पूरी तरह की प्रतिबद्धता है कि फॉरेस्ट बिना वहाँ के जो हमारे जनजाति बंधु हैं उनके जीवन में उत्थान करे बिना हम फॉरेस्ट कवर को नहीं बचा सकते। सरकार माइनर फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस स्कीम को, जो जनजाति समाज का हमारा जनजाति मंत्रालय है और जिनके फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उनके साथ मिलकर पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा है। उनके जीवन, सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑनरेबल त्रिचू शिवाजी। Question number 20, sir. माननीय मंत्री जी।
सर उत्तर सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, while appreciating the well-informed, learned minister for the initiatives he has taken to reduce the impact of the air pollution on health and the measures taken for air quality management, I would like to know from him, sir, the ministry has introduced a new star rating system to the State Environment Impact Assessment Authority for granting speedy environmental clearances, and has placed high points for fast acceptance of proposals and penalties for the SIEAs which ask for additional documents. If the SIA asks for additional documents, penalty is imposed. I would like to know, sir, whether the ministry is aware of the negative impact this can have on giving out inadequately assessed environmental clearances. Thank you. मेरे विद्वान साथी बहुत अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हैं। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न के संबंध में नहीं है। प्रश्न जो उन्होंने मेरे से पूछा है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हेल्थ सिस्टम के बारे में है, लेकिन ये जो प्रश्न मेरे से कर रहे हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है, जो मंत्रालय की एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी मैं उत्तर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने पूछा है कि हाँ, मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दी जाती है उसकी स्टार रेटिंग किस प्रकार से की जाए। ये हमारी तरफ से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए, एक निष्पक्ष तरीके से जो भी एप्लीकेशन आती है उनका मूल्यांकन किया जाए, ताकि जो भी निवेश के लिए लोग आते हैं उनको सुविधाजनक तरीके से हो जाए। इस सर्कुलर में किसी भी प्रकार से नहीं कहा गया है कि कोई रिलैक्सेशन किया जाए, लेकिन त्वरित एप्लीकेशन का निस्तारण करना, एप्लीकेशन को अनावश्यक न हटाना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आवश्यक है। दोनों ही बातों की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक का पालन करते हुए फॉरेस्ट क्षेत्र में क्लियरेंस देते समय जो पूरे नियम हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। इसलिए इसको स्टार रेटिंग का दर्जा दिया गया है, ताकि विभिन्न राज्य अपने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार करके निवेश को भी बढ़ा सके और फॉरेस्ट को भी बचा सके। इस निष्पक्षता के लिए इसको किया गया है। ये मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसका उत्तर देता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट। Sir, thank you, sir. My question is about air pollution, the impact of air pollution. Because of inadequate clearances, it may cause air pollution. That was the intention of my first supplement. Second is the amendment in the agreement to replace the word phase out with phase down. In the UN Climate Change Conference in Glasgow, the ministry pushed for the amendment replacing the word phase out with phase down of unabated coal power. Reasons for the amendments moved, sir. सर, ये प्रश्न फिर मूल प्रश्न से हट करके है, आप कहेंगे तो मैं उत्तर देता हूं। जरूर, अगर आप देना चाहे तो। सर, भारत जलवायु परिवर्तन में जो ग्लासगो में COP26 की वार्ता हुई थी, भारत ने उसमें पूरी दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। जलवायु पर ट्रांसलेशन इज अवेलेबल, प्लीज। जलवायु परिवर्तन का जो COP26 हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत में दुनिया में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो एक प्रिंसिपल लागू किया गया था, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के सारे देशों ने यह तय किया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विभिन्न देश अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपने लक्ष्यों को तय करेंगे। दुनिया में अभी तक जो विकास हुआ है, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन स्पेस विकसित देशों के द्वारा कार्बन स्पेस को घेरा गया है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है।
और भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए भारत ने अपने 50% लक्ष्यों को भी वहां पर घोषित किया है और भारत ने रिन्यूएबल में 40% के लक्ष्यों को प्राप्त भी किया है। लेकिन जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की ये वार्ता चल रही है तो उस वार्ता के अंतर्गत भारत ने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन होना चाहिए। इसलिए अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हम फेस आउट नहीं कर सकते। भारत में फेस डाउन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। ये प्रिंसिपल दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वीकार किया है और उसको भारत के द्वारा रखे गए सारे विषयों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र दिया है, जिस पर दुनिया को आगे बढ़कर हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट के साथ बचा सकते हैं, उसी को पालन करते हुए सब लोगों ने स्वीकार किया कि फेस आउट उचित नहीं है। फेस डाउन के माध्यम से ही विकासशील देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। From our learned minister, how much concerned our government is regarding the following facts. As per the data provided by Yale University Environmental Performance Index, out of 180 countries, India ranks 168. So far the mostly polluted countries are concerned, India ranks 5th in the world. Amongst Asian countries, India ranks 3rd. And unfortunately, out of the most polluted 10 metropolitan cities in the world, India is having 3, and Delhi happens to be the most. I want to know the concern of our government. Thank you. सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहते हैं, उनके क्या मानक विकासशील देशों के अनुरूप है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पॉल्यूशन करके कार्बन स्पेस को घेर रखा है, तो उनकी हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या जो है वो दुनिया की 17% है, लेकिन हमारा अगर दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है। दुनिया में जो कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा दुनिया का न्यूनतम है, जो हमारी जीवन पद्धति के कारण है, हमारे विकास के मानकों के कारण है। जहां तक एयर पोल्यूशन का विषय है, हमारी सरकार पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए के समाधान के लिए कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4400 करोड़ रुपया दिया गया। उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की इस वर्ष हम लोगों ने पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में क्षेत्रीय बैठक करी। ओमिक्रॉन के कारण बाकी बैठक रह गई, लेकिन उन बैठकों को भी आगे बढ़ाने का विषय है। जहां तक बड़े शहरों के पॉल्यूशन की बात है, मिटिगेशन के अनेक उपायों को सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खपत जो ईंधन की खपत है उसको भी बदलने का कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों में भी पॉल्यूशन के नए मानक तय किए जा रहे हैं। पराली जैसी जो घटनाएं हो रही है उसके लिए भी सरकार के द्वारा उसका जैव उसको ईंधन में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान बजट में भी सरकार ने जो दिशा दिखाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर देश के विकास करने की दिशा को दिखलाया है। लेकिन फिर भी देश के 132 शहरों में हम लोगों ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन के यंत्र लगाए हैं और जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें हवा के अंतर्गत जो 12 मानक पाए जाते हैं, जिसमें PM2 से लेकर PM10 से लेकर नाइट्रोजन से लेकर लेड से लेकर जो 12 मानक होते हैं उनकी मात्रा को उसके माध्यम से किया जाता है और 132 जो शहरों का जो मानक किया जाता है उसके आधार पर ही मंत्रालय के द्वारा उन नगरों को सहायता और उन नगरों को उसके मिटिगेशन के उपायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के भी जो स्वच्छता मिशन से लेकर के अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी एयर पोल्यूशन के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले समय में भी नेशनल क्लीन एयर मिशन को विभिन्न चारों क्षेत्रों में हम लोग रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हम मंत्रालय ने तय किया है कि जब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सांसदों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे ताकि वो भी अपने अपने म्यूनिसिपैलिटी और नगरीय क्षेत्र में जो एयर पोल्यूशन के विषय हैं उसके समाधान के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Ask the Honorable Minister
I have seen the detailed reply and what is happening in the cities on the front of mitigation of air pollution. But is there any plan by the government to ask the cities to collect data on their own for the air pollution that is happening in individual cities so that a central database can be created to see that the mitigation takes effectively? अन्य सदस्य जी का ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन चूंकि हमें मानक तय करने हैं तो उसका एक समान रूप से उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अलग अलग को स्वायत्त तरीके से देंगे तो सबके मानक को क्रिएट करने के और डाटा क्रिएट करने के अपने अलग अलग तरीके हो जाएंगे। इसलिए हमने 132 शहरों में समान मानक के आधार पर यंत्र स्थापित किए हैं, लेकिन नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज के साथ भी एमओयू करके कार्य किया जाता है। अभी पश्चिम में भी जब हुआ तो महाराष्ट्र की अनेक म्यूनिसिपैलिटियों के साथ ये जो फाइनेंस कमीशन ने राशि उपलब्ध कराई है, इसका विभिन्न नगर पालिकाओं के साथ एमओयू किया गया। और हमारा ये मानना है कि एयर पोल्यूशन की समस्या को अगर स्थानीय सुशासन स्तर की जो हमारी संस्थाएं हैं, केवल एयर पोल्यूशन का कारण केवल धुआं नहीं है, जो कचरा भी है, कचरे का निष्पादन भी एयर पोल्यूशन का कारण है, स्वच्छता भी एयर पोल्यूशन के कारण में आती है, औद्योगिक उत्पादन भी एयर पोल्यूशन में कारण में आता है, डस्ट भी एक एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, व्हीकल भी एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग अपनी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं उसमें हम महानगर पालिकाओं से ही लोगों को बुला रहे हैं। अब हम सांसदों को भी बुलाने की योजना कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी, लोकसभा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में वहां पर लगातार रेडिएशन के कारण वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं और साथ साथ में लगभग कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। साथ साथ कई वहां के लोगों को कैंसर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल करिए दीपक जी, सवाल। ये जलीय प्रदूषण रेडिएशन के यूरेनियम के खान के कारण जलीय प्रदूषण हुआ है और जिसके निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? माननीय सदस्य महोदय ने एक झारखंड के विशेष क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सभापति जी उनको उत्तर में, लिखित उत्तर में मैं तथ्यों का पता लगा करके उनको जवाब दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21, श्री वेंकट रमणा राव मोपी देवी। Yes, sir. Honorable Minister, first supplementary. Sir. Respected Chairman, sir, I thank you so much for the opportunity given. I would like to bring to the notice of Government of India that and request that since the Andhra Pradesh is blessed with the second largest coastline of 974 kilometers, inland water bodies of 8 lakh hectares and 350 square meters of the mangroves area, there is an enormous scope of establishment of integrated aqua parks, aquarium complexes, oceanaries, sports fishing, tourism boats, water sports for promoting the eco-tourism for employment and income generation of the state, as Please well as be brief. Our Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, under his immaculate leadership, is striving hard for... Please be brief in question. Sir, of employment of the largest extent of the state. The government of India is supporting is the... Venkat Ramana ji, please, this is not 0 hour. Please put your question. Sir, this is sir. Question. What is your question? Sir, whether the government has taken any measures of introducing aqua tourism in the state of Andhra Pradesh. Thank you. Please. उपसभापति जी, माननीय सदस्य को बाकायदा लिखित उत्तर में भी जो जवाब दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि तटवर्ती परिपथ काकीनाडा और नेल्लूर ये दोनों के दोनों लगभग पूर्णता की तरफ हैं और ये पूरे भी हो गए। दूसरा जो बौद्ध परिपथ के तहत साली हुंडम और बाकी कोंडा बौद्ध परिपथ है वो भी आंध्र प्रदेश में दिया गया है, वो भी पूरा हुआ है। प्रसाद योजना के तहत भी अमरावती शहर और श्रीशैलम 2 बड़ी परियोजना है जिनको पूरा किया गया है।
मूलतः पर्यटन के प्रचार प्रसार का काम राज्य सरकार का है। मैं और भी अगर वो चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को और उपयोगिता को देखते हुए पर्यटन का जो महत्व का प्रदेश है उसमें भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वहां पर सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करने का विचार है। सेकंड सप्लीमेंट्री मिस्टर राव। Aquaculture could also the income for the coastal communities and especially fishermen communities. Fish flock should be heavily engaged in aqua tourism projects. Are you reading something or putting your question? So finish, sir. Question. Please. He has no other question. Sri Vijay Sai Reddy ji. Sir, I would like to know from the Honourable Minister, aqua tourism could be a good source of income for the coastal communities, especially fishing community. Fisher folk should be heavily engaged in aqua tourism projects. Has the Minister had any discussions with the Department of Fisheries and also the respective state governments where there is a coastal line to collaborate on promoting the aqua tourism? Thank you, sir. माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रसाद और स्वदेश दर्शन की योजना है वो तटवर्ती परिपथ के तहत ही वहां पर थी, लेकिन जो पर्यटन अवसंरचना की बात माननीय सदस्य ने की है मैं उनकी जानकारी में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें ही प्रस्ताव भेजती हैं और उसके तहत पुट्टपर्ती में भी लाइट एंड साउंड शो हुआ है, वो प्रस्ताव वो भी पूरा होने की स्थिति में है और विशाखापट्टनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में भी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं उसके लिए भी लगभग 38 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिए हैं। मैं विचाराधीन एक परियोजना है सिंहाचलम और अन्नावरम, मुझे लगता है कि जो बात मैंने पहले भी कही है कि राज्य सरकारों की सहमति से ही ये प्रस्ताव हमारे पास आते हैं और मैं मानता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में आंध्र में पर्याप्त मात्रा में प्रस्ताव दिए गए हैं। अन्य जो कार्यक्रम होते हैं जलाशय, उन 4 जिलों में भी आंध्र प्रदेश में पैसा दिया गया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 22 माननीय श्री संजय राउत जी। माननीय श्री संजय राउत जी नॉट प्रेजेंट। फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रियंका चतुर्वेदी जी। Honorable Chairman, sir. Sir, this is with regards to classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the state government of Maharashtra, many MPs across board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the table in the 253rd session. Every time the response is, it is under active consideration. My only question on this particular topic is, how long will this active consideration last? Thank you. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जैसा कि माननीय सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ठीक है कि मैटर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो है 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था 2004 का, उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25/11/5 को निकला, जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को ऑथराइज किया क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा देने के काम को। इसमें फिर हमने एक लैंग्वेजिक्स एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में मैटर गया। मैटर बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही निर्णय शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। जैसे ही निर्णय आएगा हम आपके माध्यम से माननीय सदन को, संसद को अवगत कराते हैं। धन्यवाद। माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी। उपसभापति जी, मुझे ये पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर के समन्वय के अभाव में क्या कुछ इस प्रस्ताव में खामियां रही है? ये जानकारी क्या सही है? डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सांसद ने प्रश्न किया है, जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इस काम को जांच रही है। निश्चित रूप से क्या होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो फिर ये मैटर साहित्य अकादमी में गया।
तो कुछ कमियां छोटी मोटी रहती भी है, वो दूर कर ली गई है। जैसे कितनी पुरानी लैंग्वेज है मराठी भाषा, क्या क्या साहित्य, 3वीं शताब्दी में क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी तक क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि मराठा भाषा, मराठा साहित्य, उस पे देश, मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर देश गर्व करता है, देश गर्व करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक्टिव कंसिडरेशन का जो प्रकरण पहले जो सांसद ने उठाया, माननीय सांसद ने उठाया, सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही जल्दी शीघ्र निर्णय होने वाला। माननीय रजनी पटेल जी, पाटिल जी, रजनी पटेल नहीं, पाटिल जी, यस सर, क्या वो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से, एक तो मराठी भाषा जो है उसकी संस्कृति और उसकी इतिहास की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। आद्य कवि मुकुंदराज, उन्होंने ये मराठी भाषा का उगम उनसे हुआ था और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको आगे बढ़ाया था। हमारे नामदेव, संत नामदेव, जिन्होंने ये मराठी भाषा पंजाब तक लेके गए। रजनी जी, सवाल मैं ये बता रही हूँ, उन्होंने बताया कि हम अभ्यास कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना नहीं, उन्होंने मंत्री महोदय ने बताया, उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको ज्ञान देना चाहती हूँ मराठी भाषा के लिए। नहीं, आप ज्ञान देना चाहती है तो अलग है, सवाल पूछना चाहती है तो मैं मौका दे सकता हूँ, ज्ञान बाहर अलग से दे सकती हैं, आप सवाल पूछे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे भाई विनय सहस्त्रबुद्धे बोल रहे हैं, जब वो हर जगह पर राजनीति करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि मराठी भाषा सांस्कृतिक लेवल पे लिया जाए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रयास से इसको जल्द ही किस प्रयास में सांस्कृतिक दर्जा देना चाहती है और उसके लिए क्या करना चाहती है? धन्यवाद, ये हम पूछना। धन्यवाद। चेयरमैन सर, जो मैंने पहले जिक्र किया कि मराठी भाषा और मराठा साहित्य, मराठा इतिहास, इस पर गर्व है हमें, हम जल्दी ही इस पे निर्णय करने वाले हैं। आप इस पे आप ये शंका मत करिए कि हम जो आप ज्ञान दे रहे हो उससे ज्यादा ज्ञान हम भी रखते हैं, हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इंटर मिनिस्टर कंसल्टेशन होता है डिप्टी चेयरमैन सर, तो उसमें समय लगता है। MHRD का भी संस्कृति मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कई मंत्रालयों के बीच में इंटर मिनिस्टर कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्दी सकारात्मक निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23, श्री रामचंद्र झांगरा जी। माननीय रामचंद्र झांगरा जी नहीं है, अनुपस्थित। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय केसी वेणुगोपाल जी। The government is nowadays taking action against some particular channels on citing these anti-national activities. We are also very much keen about the anti-national activities for some channels is happening. We are also very much concerned about it. But the complaint in the public domain is, sir, the government is misusing this penal code to suppress the freedom of expression in the country, freedom of the press in the country. Recently, one of the channel, Media One, has been given a direction to stop the telecast for the IP by citing the same security issue. Whether they have done anything wrong, we would like to know. Thank you. From the government, we would like to know what is the crime they have done. Thank you. Thank you. Please, no, please. Respected Deputy Chairman, sir, our government is concerned about the freedom of speech and freedom of expression. I want to convey, honourable member, we are not in 1975. We are not in emergency. We are in bright and speed under the BJP government. Please. Sir, I am coming to my answer. Sir, आप तो सुनो तो चाहिए. वेणुगोपाल जी, आप तो मेरा आंसर तो सुनो. Answer to suno. Take your seats, please. You have to listen my answer. Please take your seats. See. Please. You. Please. Sir. Please. Sir, Venugopal ji. But please.
Sir, Venugobalji's question is that Media One. Sir, that Media One, we are not doing anything. Sir, whatever the channels permission is we are giving, under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the Media One is sub judice matter also. I want to convey this. And also, sir, within 2 months, Venugopalji, please take his answer. Sir, please, within 2 listen, months, madam, listen, please. Within 2 months, our government initiated actions against 60 channels. Those content, I'm not reading. Those, they content against Nothing the nation is going on. God, and please, content please. against the integrity of the nation and content against the safety of the country. So we can't tolerate. We are taking, for example, 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. The peace also. That is the thing. Thank you. Lieutenant General D.P. Vats retired. D.P. Vats from Lok Sabha chamber, sir. Lok Sabha chamber, sir. आप अपना सवाल पूछे. Through you, I will like to ask the Honorable Minister, sir, what about action against the people who come on media and use the filthy language? And the channels which give fake news? I would like to know action only initiated or it culminated into punishment also. Thank you. I want to convey through this Augustus to the member. Again I am telling, we are concerned about the freedom of speech and freedom of expression. See, the Press Council of India is there. Sir, there is three-tier mechanism is there. सीट पर बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा. Three-tier mechanism is there. One is self-regulatory. Then self-regulatory bodies can take. If the grievances is there not sorted out, then only inter-department committee is going to take the grievances and we sort out the grievances. In this, I want to tell this, 160 cases we initiated against the TV channels. Time is over, channels. Minister. Now time is over. Please. Now discussion on motion of thanks on the President's address. Honorable Sri Thambi Durai ji, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving the opportunity to speak on the subject. On behalf of ADMK party, I raise to thank the Honorable President's address to the Parliament, which listed the achievements of Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the government led by him, including achievements in the healthcare, infrastructure, defense, farming, startups and others. At the outset, I congratulate the Modi ji government for its successful fight against the COVID-19 pandemic and thank the central government for extending meaningful support to the efforts of all the governments in India. Sir, I want to once again thank our Honorable Prime Minister. When ADMK government was in power, when the first phase of epidemic took place, at that time, government extended a lot of extension to our former Chief Minister Edappadi Palaniswamy, who did marvelous work to tackle the pandemic situation at the time. Sir, at the beginning of the COVID-19 pandemic, we were all thought, don't know what is going to happen. Most of the even developed countries worried how to tackle this issue.
But that, at the time, when the old Silence, please. Silence, please. Worried about that, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who took quick decisions and firm implementation of the measures in containing the spread of the virus. As Honorable President mentioned in his address, the proof of India's capability to fight against COVID-19 has been witnessed in the vaccination drive. The rupees 64,000 crore Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission is preparing the countries for future healthcare crisis. I should like to make a special mention of the wonderful action taken by the ADMK government in Tamil Nadu under the leadership of Thiru Edappadi Palaniswamy and Thiru O. Pannirselvam to protect the lives and livelihoods of the almost 8 crores of the population of Tamil Nadu at that time, sir. Sir, ADMK government, during its period, pandemic situation, provided each cash assistance of rupees 5,500 rupees, provisions and food grains to more than 1.2 crore families for within 8 months, and separate payment of rupees 2,000 to Labour Welfare Board members, weavers, and to several lakh migrant workers. For several months, nutrition food, cooked and prepared, was given free of cost through the hundreds of people through Amma canteens in the major towns in the cities of Tamil Nadu. Medical help was readily made available to millions of COVID-affected people in Tamil Nadu. Excellent treatment was provided to all in the need. Indeed, an exemplary work was in force during the time of ADMK government, headed by Edappadi Palaniswamy, and take the opportunity to thank the central government for the support it provided for us at the time. Sir, we have administered 150 crore vaccines in less than a year. More than 90% of adults have received at least one dose of vaccine, while more than 70% have been fully vaccinated, and the third dose of the vaccine is being administered effectively. I most congratulate our Honorable Prime Minister Modi ji government for this monumental work executed effectively. Sir, India has emerged as a role model for the world in providing health care and affordable medicines to the people through Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ayushman Yojana. And as it has set up 8,000 kendras to provide the poor with affordable medicine. It is very important to note that our country has exported Ayush products worth 11,000 crores to foreign countries. Sir, and also, you know very well, even though we faced not a problem, epidemic problem, during the Honorable Prime Minister Narendra Modi period, in 8 months between April and November 2021, foreign direct investment of 48 billion was made in India. Our foreign exchange reserve exceeded 630 billion US dollars. Because of the Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile connectivity, people have benefited from direct cash transfer during the pandemic. More than 44 crore people have joined the bank system. These are all not small achievements. Sir, in the area of agriculture and food distribution, our country has set new records under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Rupees 1.8 lakh crores have been transferred to more than 11 crore farmers' families. More than 1 lakh crore rupees have been paid as compensation to around 8 crore farmers. 6 lakh hectares of land has been developed with irrigation facilities under the various schemes of the central government, and I register my appreciation for these historic achievements, and as I am also the son of the rural small farmer from remote village Tamil Nadu.
The collateral-free loans given to the 13.5 lakh medium, small and micro industries have helped to keep the economy and core sectors production more. The huge emphasis of this government on the development of infrastructure and transport will accelerate overall growth of the country and generate new job opportunity for several lakh workers. So I must especially appreciate this government for rupees 65,000 crores financial through our banks given to 25 lakh women's self-help groups. Sir, in the line with the politics mentioned by our policies, in the line of the policy mentioned by our Honorable President, our Finance Minister, Nirmala Sitharaman, has announced Godavari Krishna Pennar and Pennar Kaveri river linking has been finalized. Sir, this proposal of interlinking of rivers to transfer surplus waters from Godavari Krishna Kaveri is a right decision. Our ADM government has worked hard for it. I thank the central government for accepting our proposal, and I hope the project will be successfully completed in the next few years. Sir, at this juncture, I draw the attention of the government of India, the plight of the Indian fishermen from Tamil Nadu, from my state, who are continuously harassed, attacked, looted, and brutalized by the Sri Lankan Navy in the Bay of Bengal and the Gulf of Mannar. I plead that our government take a firm policy decision to safeguard the interest of our fishermen and protect the livelihood of lakhs of poor fishermen folks. Sir, you know very well, recently the Sri Lankan government seized the boats of the Tamil Nadu fishermen. They are going to announce they are going to auction it. This is an unfair thing, sir, because our poor fishermen, they have gone, and without such a knowledge, something would have happened. But I request the central government to take necessary steps to get back the fishing boats of our Tamil fishermen. Sir, and also, sir, this is the only way to settle this issue, you know very well. And the way of stopping the menace could be retrieving the Kachetivu. This is the very thing, sir. You know very well in West Bengal also, when a certain island is given to Bangladesh, at that time it is passed by the parliament. But Kachetivu is not done like that. It is arbitrarily given at that time when Madam Indira Gandhi was the Prime Minister to the Sri Lanka, but not ratified by the Parliament. Therefore, still Kachetivu is the part of Indian territory. Therefore, it is high time to see that we have to fight and get this Kachetivu to solve the fisherman issue. Otherwise, Sri Lanka is now, you know, they are moving towards China. That is the relations going on. It is a threatening for our Indian security. Therefore, whatever the Chinese government is doing, not only in Arunachal, other places, even Sri Lanka also, they are trying to enter to give threat to our Indian thing. Therefore, it is high time to see that we have to take that action also, sir. Sir, and also, regarding the mentioned governance thing, sir, President address, this is the 150th birth anniversary of Sitharaman Pillai is going to, and also 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Gopi, they are going to celebrate it properly. I am very thankful for the central government to come forward to the freedom fighter who navigated the ships for a British period. You lost all the life and wealth of Sitharaman Pillai. To honor that, the government has come forward. Appreciate for that, sir. Regarding the NEET examination, sir, this is known very well. We are all raising, especially Tamil Nadu, all the parties, to get the exemption to the NEET examination, because the NEET examination affects our medical students, aspiring medical students, rural people, especially rural students, they are studying there. Sir, as long as education is there in concurrent list, this problem will occur. When that has come, you know very well. 1975, 70, 76, 77 period, emergency period, at that time former Prime Minister Indira Gandhi brought this education from state subject to central concurrent list, brought that at that time. After the government, Marathi government came,
Marathi government changed many things within the many bills, but the education, that government also allowed to continue concurrent list. Because of that subject is concurrent list, we are tight. Central government taking many laws. At the same time, state governments are going down. Therefore, this high time, I request the government to rethink it, because they announced in the President address, they are going to start nearly 200 channels of giving education for the people, and also they are going to conduct programs like professional courses, like engineering courses in regional languages. When that is the case, when we are going to promote our other languages, which is in the 8th schedule, most of the languages of that 8th schedule, including Tamil, your Bengal, all must be made, Bengal language, all must be made as a national language and an official language of this country. That is our demand. We are going raising that. That has to be done. Then only we get the equal opportunity. And also when we are conducting the all-India examination, when you are writing, the state must be given the more power to see that professional admissions, courses admission, such as medical courses, is given more to the state government. That is why our party, ADMK party, go on requesting many times, meeting the central minister, honorable prime minister, and asking that to help the rural people, especially students. It has, otherwise, what is going to happen now? There are more coaching classes started, professional course started. Lakhs of money that people are paying and to get that kind of education to enter the NEET examination. But poor people cannot do that. That is why we are asking the exemption for that. Therefore, I think the central government consider all these things, sir. And also, our honorable Prime Minister has mentioned, as in the President address, mentioned honorable Prime Minister's vision for that the government is moving fast on building a strong foundation for the next 25 years following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, our Sabka Prayas. Sir, creating India which includes all benefits, all which has to be self-sufficient, sir. These are, I am very happy to note that this, our Prime Minister, Narendra Modi ji, has come forward this kind of vision which is going to help our country. Therefore, I am very thankful for giving the opportunity, and also once again I thank the Modi ji government and Modi ji and others, and who have taken long kind of steps to see that India is going to develop for that. I thank once again for the President's address. Thank you. Thank you. Sri A.D. Singh ji. Thank you very much, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak. I rise to thank the respected Rashtrapati ji for his very comprehensive listing of the achievements of the present government and the way forward. Indeed, the catalogue and success and achievement are impressive, and I congratulate the Prime Minister and his team for these successes and also the work in progress. This success will be even better if it was accompanied by social cohesion and unity. Unfortunately, the nation's progress is slowed down by divisions that we see emerging in society. This needs immediate course correction. This reminds me of an anecdote from Gandhiji's visit to St. Stephen's College, as reported in the college magazine of 1915. According to this story, a sadhu came to another iconic leader of our freedom struggle, Sri Gopal Krishna Gokhale, to make suggestions that would suppress a minority community. Gokhale rejected this specious religious reasoning by saying that if to be a Hindu he has to do what has been suggested, then he be better known as a non-Hindu. Rashtrapati ji said that the government is committed to counter the forces challenging the sovereignty and unity of the country at every level, and strict action will be taken against the forces inciting violence. I urge the government to inform the House actions that have been taken so far against those who publicly called for genocide and targeting specific communities. The House will support strictest of action against all such individuals, irrespective of their political affiliations. A strong government cannot be seen as cowing down to a handful of fringe elements
who are sowing discord in our society on a daily basis. We pay tribute to the 20 brave hearts who made the ultimate sacrifice to defend every inch of our land in June 2020. But the threats have not diminished. More conflicts have arisen, and despite regular talks, there are no signs of illegal occupation of our land ending anytime soon. The famous salami slicing policy is in action, and our response has been muted. I need not remind the government that such silence only encourages the aggressor who sees this as a sign of weakness. In addition, our half-hearted economic countermeasures have been ineffective. Our trade deficit with our main challenger has reached a very new high last year. Protection and unity and sovereignty of the nation is not the work of one individual. It is also not about seeking personal glory. It is national unity. I would like to pay tribute to late General Rawat, our first CDS, but I am disappointed that such a sensitive post has been lying vacant since the tragic accident. I would urge the government to find his successor quickly. It appears that the government has no succession plan or proper personal planning if one sees the number of high-level posts lying vacant in the executive and the judiciary. In the speech dealing with foreign policy, I noticed a significant omission. Momentous changes have taken place in our neighborhood when a government in Afghanistan was toppled and its friendly people have been brought under an extremist regime that denies all human and basic rights, has dragged the country into unprecedented humanitarian crisis. Historically and including under this government, India has always stood with the people of Afghanistan and helping them in all possible manner rather generously. Our humanitarian assistance is still reaching Kabul. Given our traditionally close relations and brotherhood that Afghans feel for India, we would urge the government of India to stand firmly with the people of Afghanistan and facilitate travel and trade and continuing education of Afghans in India. The policy so far has so far been left much to be desired. In fact, even today, scores of Afghan students are stranded in Kabul without a visa, denying them the possibility of coming back to the colleges. Their future is being put on hold. Our policy will need to focus on the people, and we should be using our influence to ensure the regime in Kabul works towards forming an inclusive national government. Otherwise, it is feared that Afghanistan will become a playground for radical and anti-India groups. Please conclude. India will have to learn to stand with its friends. If not, we will be repeating the historical mistake of once letting down our friendly people of Tibet. It is well documented that the Tibetans never accepted the sovereignty and suzerainty of the Chinese. Even Nehru, who is much loved by the current government, advised them to approach the UN and sent a young military officer, Zorawar Bakshi, to undertake strategic military reconnaissance in Tibet in 1949. Things did not turn out as planned, and rest is history. Please conclude. However, the nation faces long-term consequences, both action and inaction. In this increasingly multipolar world, India will have to align itself with its own national interests in its own neighborhood and beyond. Thank you very much. Thank you. Sri Birendra Prasad Vaishya. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to discuss on the subject. I raise here to thank His Excellency, President of India, for his presidential address. Sir, in his presentation, President very rightly mentioned, during this period, our development in the health sector, our development in the infrastructure, agriculture sector, sports arena, everything Honorable President has described in his address. Sir, I must compliment Prime Minister Nirmala and his government, because within a year, our government successfully given 70% adult population of the fully vaccinated. Sir, India is a big country, and within this first span of time, sir,
150 crore Indian citizen is vaccinated. When vaccination started, sir, every part of the world, they have discussed how it possible India to implement this project because India have a huge population. But this government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, it is clearly justified that India is doing everything, India can do anything, and it is a great success for Indian government. 75%, more than 70 senior citizen of the country, adult citizen of Kati, is vaccinated. Sir, in health sector, sir, within this year, our country has developed in marvelously well, sir. Sir, we remember in the first wave of COVID, sir, India is crying for sanitizer. There is shortage of masks. There is shortage of medicine. But, sir, within this year, India developed anything. We produce sufficient masks, sir. Now we can export. We have produced our vaccine, and now we can export, and we produce the medicine also. This is the successful of this government. I must compliment health sector. I must salute all the health workers for their great successful, sir. Sir, another great achievement of this government is, sir, agriculture sector, sir. Government has given almost priority in the agriculture sector, sir. And during this year, COVID period, what a worst condition faced by our people, urban area, rural area, farmers, everybody faced the problem. Although there is a COVID, sir, 30% agriculture produce has increased during that period, sir. Sir, not only that, sir, 33%, sir, horticulture production also increased, sir. But I must compliment this government, sir. The government procured more than 430 lakhs metric tons of the wheat during the Rabi season, benefit about the 50 lakhs farmers, sir. And record quantity of about 90 lakhs metric tons of paddy was procured during Kharif session, sir, benefited 1 crore 30 lakhs people. This is the achievement. This is the achievement of the government. Not only increase the production, farmers are get benefiting, farmers are get their price. Instead of going other place, government has given enough money and government procured this product. I must compliment Narendra Modi ji for this successful India. Sir, not only that, sir. Country should remember one thing. During the COVID period, Indian agriculture products is increased like anything else. This is one of the greatest achievements, sir. Secondly, sir, one more thing, sir. I am coming from the Assam, sir. During this period, Assam also export agriculture product to the neighboring foreign countries, sir. This is the achievement of our government, sir. Sir, one more thing. I like to say, infrastructure development. We always speaking of the infrastructure. Through the Bharat Parijojana, sir, infrastructure development is achieved in every part of the country, sir. Sir, if I'm not speaking about the Tokyo Olympic, it will be incomplete, sir. I'm happy to say that, sir, I lead the Indian contingent in Tokyo Olympic Games. I was the chief of the mission for Indian contingent, sir. And India, for the first time, India is making history. India getting all type record medals in Tokyo Olympic Games, sir. Sir, in the athletics, earlier our Bindra got the medal in the shooting. In athletics, for the first time, Indian athletes got the gold medal, sir, in the athletics. I must congratulate him, sir. Sir, northeastern region is the very intricate part of our country, sir. Sir, it is long way from Delhi, sir. From Delhi to Guwahati, it is more than 2,000 kilometers, sir. Other northern, it is more than 2,700 kilometers, sir. But, sir, this Narendra Modi government has given
well transportation system, well railway system to the northeastern region, sir. And today, I am proudly said, sir, proudly say, all the capital of northeastern region, today, railway connectivity is there. Every part of the northeastern region have a railway to there. There is a better air connectivity is there, and recently the shipping minister has announced there will be waterways connectivity will be started very soon, sir. Sir, Assam is famous for tea production, sir. India is getting huge currency, foreign currency from the tea, sir. And small tea grower of Assam played very important role for the tea production of Assam, sir. So small tree growers, they are not only produce the tea, sir, they are successfully resolve certain extent of unemployment problem in Assam, sir. So to encourage tea industry, to encourage small tree grower is the call of our. Although government has took some initiative to develop the tea industry of Assam, I specially request through this presidential address, through you, sir, I request Honorable Minister to government, sir, look after this issue, and they should give a priority, topmost priority to the small tree growers is our country, in the interest of the Indian economy, in the interest of the northeastern region's economy, in the interest of the Assam economy, and especially in the interest of the curb the unemployment in our country, sir. Sir, one more thing I like to say, sir. Assam is a oil producing state, sir. Assam have a huge quantity of oil and national gas, sir. And I like to request government, through you, sir, please establish some better there is a lot, this government has taken lots of initiative. This government has given more than 3,000 crore rupees for the expansion of the Nirmala refinery. This government is taking initiative to biofuel gas production Nirmala refinery, to export oil products from Nirmala refinery to the other parts of the world, sir. But I like to request you, sir, some more social activity for the petroleum ministry should be started in Assam, sir, because we are an oil producing state, and this oil sector have a huge amount of money, and they have a special responsibility, special community responsibility fund is there, sir. I like to request through government, through you, sir, I like to request government to take some initiative, given some more money in the social responsibility scheme to the northeastern region, to build some more hospital, infrastructure project, etc., especially, sir. According to report of the World Health Organization, maximum number of cancer patients of our country is from the Assam and northeastern region, sir. I like to request you through you, to the government, to the ministry, please establish some special modern super specialty hospital, especially in Upper Assam, from the oil responsibility fund. I think if this will be done, definitely it will not only benefit from Assam, it will benefit Assam and northeastern region. With this word, sir, I totally support the motion moved by the Honorable Minister to thank the President. I totally support the move. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Sri Mukhtar Abbas Naqvi ji. उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। उपसभापति महोदय, देश ने इन 7 दशकों के अपने सफल सफर में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मौके भी देखे हैं जो कि इस देश के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। मैं इन 7 दशकों के इस इतिहास भूगोल में नहीं जाता। मैं इन 18 वर्षों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया, मैं आपके माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। आज उपसभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान 2 हो गया है।
आज इस देश में दो भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। दो भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। लेकिन हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, संकल्प को समझने के लिए और समावेशी सोच को समझने के लिए हमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर और सोच से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। आज हमें इस बात का गर्व है, हम सबको गर्व है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी राजनीतिक विचारधारा का है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की इस मट्टी पर हम सब गर्वान्वित हैं। गर्व करते हैं कि हमारा ये जो एक संकटों का, कंटकों का सफर रहा है, वो सफल भी रहा है और आज दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक धाक भी जमाई है। मैं इन 18 सालों में जो बदलाव हुआ, मैं एक एक करके 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ इस देश में, कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे इस हाउस में, हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, दिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान। कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण के लक्षण बहुत चिंताजनक हैं, बावजूद उसके पोषण अभियान के 66% फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। क्या ये सच है? माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वो इस प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि जनवरी 13 पिछले साल हमने पोषण अभियान के इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत नए गाइडलाइंस हर प्रदेश की सरकार को प्रस्तुत किए थे। तत्पश्चात हर माह प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से हम हर घर तक, हर बेनिफिशियरी के घर तक उनके जो लाभ हैं वो पहुंचे, विच इंक्लूड्स राशन। हमें प्रदेश की सरकार ने अवगत कराया है और रिपोर्ट भी उपस्थित करवाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सरकारें विच इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश बेनिफिशरीज के डोर स्टेप तक बेनिफिट देकर आई हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2
Honorable Sri Vaiko ji, Sri Vaiko, not present. Question number 2. Wait, the answer is late, please. Mani Abdul Wahab ji, supplementary. By Muslims, Dalits and tribals, there are eligible number of minorities, Dalits and tribals in our celebrated media rooms also. Question is whether the government will give any direction to the private sector to publish their employees' demography to understand the situation of discrimination, or constitute a committee to study about such discrimination in private sector. Thank you, Abdul Wahab. Honorable Chairman, it is subject to the legislation. However, the government is very sensitive to the issue of the affirmative action, including reservation in the private sector, and has initiated wide-ranging consultations with the view to explore the best possible way to ensure that private sector fulfills the aspirations of the youth. At present, the Constitution does not provide any mandate for the reservation of the jobs for SC, ST or the general, even the general category in the private sector. Sir. The reservation of the private sector can be provided by only bringing the legislation in the Constitution, which would therefore require wider discussion, consultation with the stakeholders before we will be taking up the issue, sir. Thank you. Manya Sri P. Bhattacharya ji from Lok Sabha. Please put your question. Voice, mic is not working. Please. Manya P. Bhattacharya ji from Lok Sabha. Your voice. Hello. Mic is not working. Please tell. I am speaking. Yes, please. अब सुनाई दे रही है आपकी आवाज. अभी सुनाई जा रहा है तो? जी हाँ. In so many cases, we have seen the private sectors are avoiding to follow the reservation for the youth. Why the government of India is not going to put up a legislation so that all the private sector industry has to follow the reservation policy followed by the government? Mani Mantri ji. Sir, our honorable member is asking so many questions about the reservation in the private sector. But with regarding the affirmative action for the SC and ST and the other general caste private sectors, coordination committee is there. It was set up by the Prime Minister's office in 2006 under the chairmanship of the Principal Secretary of the Prime Minister, sir. It had held 9 meetings from the 2006 till 2019, sir, and it is received suggestions from the various stakeholders, sir. Even for the reservation of the ST and ST, there was a coordination committee to resolve the unemployment problems. The committee held several meetings, sir, and advised the taken the appropriate action on the issue of the consulting the concerned departments and HRs of the private companies. They provide the employment for the candidates who belong to SC, sir. Even our government, as by Honorable Prime Minister Narendra Modi, is advised to promote and set up more skill training programs in all the sectors of the entire private sector, sir. Thank you. Dr. Sivdashan. Dr. Sivdashan. Please. Decreasing number of jobs of SC/ST community in private sector the last 5 years? The question will not arise, sir, because we have no such statistics, sir. Question number 3, Dr. C.M. Ramesh. Manya Mantri ji. First supplementary. Autonomy accompanied by physical responsibility to the Panchayat Raj department, Panchayat Raj system in the country. सभापति महोदय, पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए
माइक पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए राज्य विधानमंडलों से प्राधिकरण प्राप्त करके पंचायतों को सदृढ़ वित्त साथ ही पंचायतों के निर्दिष्ट करो शुल्कों पत्कर का प्रावधान है। 5 वर्षों में पंचायतों वित्तीय स्थिति की समीक्षा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के माध्यम से भी की जाती है। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, जहां आपकी लोकेटेड सीट से कृपया वहां बैठें और जो सदस्य गैलरी और लोकसभा में बैठे हो कृपया बैठकर ही सवाल पूछें। माइक से आवाज आएगी और सुनाई देगा। कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज। सर गैलरी सर, सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, to improve effectiveness of governance mechanism, in some states, it is gathered that the certain minimum qualifications for the representatives have been prescribed. Whether the government may consider this aspect and also consider providing training to local representatives to ensure more effectiveness of Panchayat Raj system in the country. Thank you. सर, पंचायत सदस्यों को न्यूनतम अर्हता का जो सब्जेक्ट है वो राज्य का विषय है। केंद्र सरकार निहरता तय नहीं कर सकती क्योंकि चुनाव लेना है राज्य का सब्जेक्ट है, लेकिन चुन के आने के बाद पंचायत राज मंत्रालय की एक योजना है RGSA, उसमें हम लोग 2 तरह के प्रशिक्षण जो चुन के आते सदस्य उनको देते हैं। इसमें बेसिक ट्रेनिंग, जो सदस्य चुन के आते हैं उनके अधिकार क्या है, तो चुन के आने के बाद किस तरह से गांव के विकास में योगदान दे, उसका प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। उसके 2 साल के बाद में रेफरेंस ट्रेनिंग दी जाती है। जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज के माध्यम से किस तरह से जुड़े, अपने गांव का विकास करने के लिए सारे जो पोर्टल है वो किस तरह से आत्मसात करे, इसका ट्रेनिंग 2 साल के अंदर दिया जाता है। और ये केंद्र और राज्य सरकार की पुरस्कृत योजना है और ट्रेनिंग देने का काम राज्य सरकार करती है। धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। सर गैलरी नंबर 4 सर, गैलरी नंबर 4 सर, प्लीज। हाँ, फ्रॉम गैलरी। यस सर। Sir, in view of the constitutional amendments, the Panchayat Raj institutions are strengthened, but in respect of Andhra Pradesh, there is a complaint that the funds released for the Panchayatis has been diverted and withdrawn from all the Panchayati accounts. If that is so, the Panchayat institutions will be weakened. So, is there any steps have taken to rectify it and to advise the government of Andhra Pradesh? Thank you. Please be specific in your question. Government of Andhra Pradesh not to withdraw the amounts from their accounts with respect to Gram Panchayats. Please. अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार से जानकारी लेके उसके बारे में पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से हम लोग उचित निर्देश जारी करेंगे। माननीय राकेश सिन्हा जी। महोदय, मैं जानता हूं कि पंचायत राज्य का विषय है और अलग अलग राज्यों में पंचायतों के कुछ अलग अलग कानून, नियम और कन्वेंशंस हैं। क्या भारत सरकार या मंत्रालय इस बात की व्यवस्था करेगी कि अलग अलग राज्यों के पंचायत के चुने हुए सदस्यों का अनुभव दूसरे राज्यों में हो, जिससे कि पंचायत की एफिशिएंसी और पंचायत का जो कन्वेंशन है उसका विकास हो सके? अगर एक छत्तीसगढ़ के पंचायत में कोई कन्वेंशन है और पंचायत के कार्य करने का तरीका है, वही तरीका यदि असम में हो, धन्यवाद राकेश। इसके लिए मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये प्रावधान है, जो पंचायत अच्छी काम करती है वहां पे कुछ लोग जाते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दूंगा, हिरवे बाजार पंचायत का। वहां पे बहुत सारे राज्यों से वहां पे जो अच्छा काम हुआ है वो देखने के लिए दूसरे पंचायतों के सदस्य जाते हैं। डॉक्टर अमर पटनायक जी।
Sir, we know that panchayats have not been transferred finance, functionaries and functions. But now the biggest question is for their inclusion in Digital India campaign that is being talked about everywhere. What is the plan of the ministry? सर, ई ग्राम स्वराज के माध्यम से पंचायत राज मंत्रालय में लगभग 2 लाख पंचायतें अब तक जुड़ी हुई है। बाकी बचे हुए पंचायतों को ई ग्राम स्वराज के माध्यम से हम लोग जोड़ने के बारे में हमारा प्रयास शुरू है। ये सारा जो पोर्टल है यो तकनीक के माध्यम से पंचायतों को जोड़ के कम से कम वहां पे भ्रष्टाचार हो, इसके लिए ये हम लोगों ने कदम उठाया है और इसका अच्छा रिस्पांस हमको मिला। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4, चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय चौधरी साहब। महोदय, मैं माननीय मंत्री जानना चाहता था, उसका जवाब माननीय मंत्री ने सही नहीं दिया, लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री, मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी ने जो आपने जवाब दिया है उसमें कहा है कि क्राइम इन इंडिया में ये आप प्रस्तुत करेंगे। हम लोग क्राइम इन इंडिया कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। जवाब मांगा गया है हाउस में, जवाब हाउस में आना चाहिए था। लेकिन आपसे सर्वेक्षण चाहता हूं कि माननीय मंत्री से कहें कम से कम ऐसा जवाब दें कि हम लोग उसको जान भी लें। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कि नकली नोटों के बारे में जिस प्रकार से ये नोटबंदी हुई और पूरे देश में हाहाकार मच गया, उसके बाद आज तक स्थिति क्या है कि नकली नोटों का प्रचलन बंद हुआ, उससे अधिक नकली नोट आज बाजार में आ गए। धन्यवाद। सभापति महोदय, जहां तक उन्होंने मूल प्रश्न के संबंध में कहा है कि उत्तर सटीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने पूछा है वह उत्तर सभापटल बहुत ही सटीक रूप में रखा गया है खंड वाइज। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि जब विमुद्रीकरण हुआ है उसके बाद जाली नोटों के प्रचलन में भी क्या स्थिति आई है, बढ़ी है या घटी है। तो जाली नोटों का जो एक तरह से प्रचलन है जिसका जो कुप्रभाव देश पर पड़ता है वह केवल आर्थिक स्थिरता के लिए ही खतरा नहीं है, देश में आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। माननीय मोदी जी की सरकार संकल्पित है कि हम देश की अखंडता के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम किसी भी प्रकार के साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक नोटबंदी की बात आई है उसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम आए हैं। नोटबंदी के कारण तो बहुत है, इस मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि इसके कारण जो काला धन था, काला धन को बाहर निकालने में बड़ी कामयाबी मिली है और आज इसको देश और दुनिया में इसको देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आज जिस प्रकार के काला धन और दूसरा जो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सल इलाकों में जिस काले धन का उपयोग होता था वह एक बड़ी मात्रा थी और इस विमुद्रीकरण के कारण उस पर कमी भी आई है, विराम भी आया है। जहां तक जाली नोट के प्रचलन की बात है कि ज्यादा आया है, ऐसा नहीं, इसकी कोई स्थिर प्रवृत्ति नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन जैसे 17 और 18 के उदाहरण इसमें हमने उत्तर में दिया है, तो लेकिन इस पर सरकार की संकल्पित है। और जो जाली नोटों का अगर यह क्वेश्चन का भाव यह है कि जाली नोट ज्यादा अभी बरामद किए जाते हैं, इसका मतलब है कि सरकार अपने संकल्प के अनुसार उस साजिशों को नाकाम कर रही है जो जाली नोट के प्रचलन को भारतीय अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री चौधरी साहब। थे कि आखिर कितना प्रतिशत अब जाली नोट चल रहा है, नहीं बताया माननीय मंत्री, नहीं बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री पूछना चाहूंगा कि इस नोटबंदी को के बाद भी यदि जाली नोट नहीं रुक रहा है
तो सरकार को जो कल माननीय बजट पेश किया गया, माननीय मंत्री ने पेश किया, उसमें इन्होंने कहा डिजिटल नोट अब जारी होंगे। क्या ये नोट, फर्जी नोट रोकने के लिए डिजिटल नोटिंग से लाभ मिलेगा या इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? जरूर लाभ मिलेगा। जहां तक कि इन्होंने कहा कि नोटबंदी और जाली नोटों का जो प्रचलन है उसमें कमी आई या नहीं आई है, मैं इनको स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कहा हूं, अगर और विस्तृत उत्तर चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि एनआईए अब तक FICNA के 12 केस दर्ज किए हैं और उस 12 केस में जो पाकिस्तान के 21 केस थे और अब तक उसमें 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 108 दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जब सरकार इस प्रकार की जांच करती है, FIR करती है, ठोस कार्रवाई करती है और गिरफ्तारियां होती है, तो निश्चित रूप से जाली नोट के प्रचलन व्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयास होता है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। कभी कमी आई है तो हमारे ठोस निर्णय और कार्रवाई का परिणाम है, कभी बढ़ती है तो हमारी जो प्रक्रिया है उसको रोकथाम के लिए तो हम उसकी बरामदी भी ज्यादा करते हैं। धन्यवाद। श्री अनिल देसाई जी फ्रॉम लोकसभा। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रतिशत की बात करते हैं तो गृह मंत्रालय जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो एनआईए जो इसकी जांच एजेंसी है उसके माध्यम से हम इस पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो प्रश्न है, बहुत प्रश्न इनका वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। श्री माननीय अनिल देसाई जी बैठकर बोले, आवाज आएगी, बैठकर बोले प्लीज। थैंक यू चेयरमैन सर। डेप्यूटी चेयरमैन सर, सर in the chart which has been given by the minister, if you go by the chart, the progressively recovery of the notes is being shown. My question to the minister through you is, when after demonetization, when the new bill was introduced, government through RBI had made it categorically emphasized that security features which are embedded in the new bills, they will never be able to compromise by the counterfeiters. To ward off whatever attempts were being done earlier before the demonetization and why the demonetization has taken place, to keep off terrorists and that easy accessibility to duplication of the notes and all. Now that, I mean, this is progressively going higher and higher, barring... Please put your question briefly. My question to the minister is, what measures are being taken? Because if minister, what he's saying in the reply given to the earlier colleague, that attempts are being made to see that this is covered, what exact measures, because this is playing with the internal security, please, internal security of the nation. This is a very important question, sir. Let me ask. I know, but... what measures are being taken? I mean, it is not that, I mean, what answers are being given by the minister. Please be brief. Not, what measures are being taken to put full stop to this, to curb this menace. Thank you. सभापति महोदय, इसके लिए सरकार व्यवस्था की है और कानूनी उपाय भी किए हैं। जैसे कि जाली करेंसी नोटों को बनाना, उनका उपयोग करना, रखना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 क से अंगत के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके तहत हम काम करते हैं। इसको एनआईए एक्ट के तहत इसे अधिसूचित अपराध में बनाया गया है ताकि इस पर रोकथाम की जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले FICN संबंधी अपराध को वर्ष 2013 में UAPA के तहत आतंक की श्रेणी में लाया गया है ताकि उसका हम विस्तृत जांच भी कर सके और रोक भी लगे। संस्थागत उपाय भी इसके रोकथाम के लिए किए गए हैं और गृह मंत्रालय ने इसके लिए CFT बनाई है जो आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए है। एनआईए को FICN के मामलों को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने FICN के मामलों को प्रभावी समन्वय और तत्काल सूचना साझा करने के उद्देश्य से FICN समन्वय केंद्र भी बनाई है। 2014 में भारतीय मुद्रा के सिक्योरिटी फीचर की गुणवत्ता में भी सुधार किए गए हैं ताकि जाली नोट की छपाई नहीं हो सके। इस प्रकार से संस्थागत भी उपाय किए गए हैं, कानूनी उपाय भी किए गए हैं और समय समय पर इसका समीक्षा भी होती है और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। धन्यवाद। माननीय महेश पोद्दार जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, my question is, what
whether the government maintains data on such counterfeit notes that have been recovered around the border areas and the country-wise particularly. If so, what measures are being taken to improve the recovery from such countries from where the migration is more? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। उसकी निगरानी एक तो सीमा पर चौकसी बरत के जो हमारी वहाँ फोर्सेज लगी है सीएपीएफ की, उसके माध्यम से भी करते हैं। दूसरा कि कई प्रकार के प्रशिक्षण भी हम लोग बैंकों को देते हैं, और जहां तक इन्होंने कितने जाली नोट पकड़े गए इसका आंकड़ा जो बता रहे हैं, यह ब्यूरो के रिकॉर्ड में अंकित है और इसमें भी है। अगर वर्षवार जो हमने उत्तर में टेबल पे दिया है जो 5 वर्षों का है, उसके लिए उस टेबल में देखा जा सकता है। और खास करके यह जो जाली नोट है यह पाकिस्तान के साजिश का एक प्रयास होता है, और यह पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया में प्रवेश करने की प्रयास भी होता है। बांग्लादेश से भी आते हैं, और लेकिन बॉर्डर पे भी, और बॉर्डर के अंदर किसी प्रकार से वह प्रवेश भी करता है, तो राज्य की भी एजेंसियां काम करती है और केंद्र की भी एजेंसियां काम करती है, और उसमें हमको कामयाबी भी मिलती है। धन्यवाद। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। सभापति महोदय जी, बड़ी चिंता का विषय, मैं सिर्फ एक फिगर्स जान के माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जवाब जानना चाहता हूं। कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए हो रहा है कि भाइयों बहनों ये जो जाली नोट है बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब 2000 के नोट्स 4,67,346 पकड़े गए जो नए नोट है। 500 के नए नोट्स 2,97,372 पकड़े गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कहते हो कि हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कैसा प्रयास चल रहा है कि हर साल जाली नोट कम होने की बजाय आपका टेबल दिखा रहा है कि 2019 में 2000 के नोट्स 90,566 पकड़े गए थे, वो कम नहीं हुए, बढ़ के 2020 में 2,44,834 हो गए। माने बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आप कहते हो तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान की साजिश करते रहे और हम सीना तान के बैठे रहे? क्या कोई आपके बड़े लोग जाली नोट नेपाल से या बाहर से आए उसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं, उसकी जांच करवाना चाहते हो या नहीं? प्लीज क्वेश्चन। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं पहले ही कहा हूं कि इसकी प्रवृत्ति अस्थायी नहीं है। अगर जिस वर्ष के आंकड़ों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि 7, 17 और 18 के भी आंकड़े देखें कि 17 के अलावा 18 में कम हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ज्यादा जाली नोटों की जब्ती यह भी एक शो करता है कि हम कार्रवाई तत्परता से कर रहे हैं। तो हमारे कार्रवाई का भी परिणाम है कि जिस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास को विफल करने को भी यह प्रतीत कराता है कि जाली नोट ज्यादा से ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। और जाली नोट के वर्ष वाइज आंकड़ा भी दिए गए, तो कभी कमता है कभी बढ़ता है। 2019 की 20 की बात उन्होंने किया है, तो टेबल में 2017 और 18 के टेबल में भी आंकड़े को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका अस्थायी प्रवृत्ति नहीं है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 श्री टीजी वेंकटेश जी। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री। उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। My question first supplementary. Sir, my first supplementary question through you to the Minister, Home Minister. Sir, after bifurcation of Andhra Pradesh, Telangana, newly formed states, sir, they used the electricity power supplied by Andhra government, Andhra Pradesh, and they have not paid the bill, sir. They have to pay more than 3,000 crores. If you calculate the interest around 6,000 crores, they are not showing any interest for the payment to the Andhra government. Whether government of India, whether they can deduct their payments and pay to the Andhra Pradesh, any working out that way they are doing. Thank you. Sir. Thank you, Venkatesh. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, केंद्र सरकार चिंतित भी रहती है और प्रयास भी करती है कि पूरे देश के समग्र विकास के साथ साथ तेलंगाना और क्या
नहीं, आप जवाब दें। नहीं, हमको बहुत मानते हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, तो अभी भी हमको निमंत्रण दिए कि एक बार आकर हमारे यहाँ भोजन। आपस का रिश्ता हाउस के बाहर। प्लीज माननीय मंत्री जी जवाब। तो सरकार चिंतित है कि पूरे देश के समग्र विकास के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी विकास हो। एमएचए इसमें एक नोडल एजेंसी है और नोडल एजेंसी के रूप में यह कोऑर्डिनेशन का काम करती है और इसके जो अनुसूची 12वीं है उसमें विद्युत से संबंधित विषय इसमें जो डाले गए हैं, तो जो उसके भुगतान का, बिजली बिल के भुगतान का मामला है, निश्चित रूप से यह एक राज्य से दूसरे राज्य का है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की समस्या बीच बीच में भी आती रहती है। कई तो इसके निर्णयों को लागू किया गया और कई निर्णय ऐसे हैं जिस पर दोनों की सहमति नहीं बन पाती है। तो इस बिल के संबंध में अगर सहमति नहीं बनती है, भुगतान नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार जरूर गृह मंत्रालय की ओर से वहां के इस स्थिति से अवगत होकर आगे अगर कुछ स्थिति इसकी बनती है तो उसमें चूंकि हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते, तो उस संबंध में अगर कुछ सुझाव होगा तो हम उसको भेजेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री। To you, sir, the Andhra Pradesh Srisailam Dam we have, sir. The Telangana government, they have power project downstream of the Srisailam project. They are not disciplined, sir. They are using the downstream, they are using the water for power generation, irrigated water, for irrigation purpose water. They are illegally, they are drawing and they are making the power, sir. This is not acceptable, and Home Ministry has to take immediate steps, and they should please put your collect that much quota future. They should stop that water, sir. Thank you. देखिए, मैं पहले बताऊं कि हम कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और यह जल शक्ति मंत्रालय इस विषय को विशेष रूप से देखती है। लेकिन दोनों राज्यों की समस्या जब इस प्रकार से आती है और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अगर कोई बिजली उत्पादन की बात आती है, तो उसमें निश्चित रूप से इस परियोजना के अंतर्गत जो बातें आती है, इसके लिए भी जब हमारे गृह सचिव के स्तर से अभी तक 26 मीटिंग हो गई है और अगर इस प्रकार की कोई बातें हैं जो माननीय सदस्य ने रखा है, तो आगे की किसी भी इस प्रकार की मीटिंग में इस बात को भी दोनों राज्यों के सामने रखेंगे। धन्यवाद। श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, प्लीज। I'd like to ask the Honorable Minister about the capital of the state of Andhra Pradesh. There is a lot of confusion that was created by the state government when they sought to create 3 capitals. Then subsequently that legislation was withdrawn. But the central government has sent some communications addressing to Hyderabad. So these have all been circulating in the media and social media. While we all know Amaravati continues to be the capital, we would like to have the minister to clear this confusion for once and for all as to what is the capital of Andhra Pradesh as of today and who has the authority to decide on the capital issue. Thank you. महोदय, राजधानी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य को ही है। 23/4/2015 के अनुसार आंध्र सरकार ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित की थी, लेकिन जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश ने एक अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां अधिसूचित की। अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस चीज को, एक जो समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई, कि इसको वापस ली है और कही है कि समीक्षा के तत्पश्चात हम इसका निर्णय लेंगे इस तीनों राजधानियों के संबंध में या एक राजधानी के संबंध में। लेकिन अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी राज्य सरकार ने अधिसूचित की। धन्यवाद। माननीय वी विजय साई रेड्डी। The Honorable Minister, sir, the legal division of the assets valued 1,42,601 crore
belonging to the institutions listed in Schedule 9 and Schedule 10 of AP Reorganization Act of the and also of the institutions not mentioned in the Act also has not happened so far, and it is the responsibility of the central government to ensure that Act is implemented. This has hampered their functioning and has an adverse impact on the Andhra Pradesh. Is the ministry taking any steps to expedite the division of such assets? And my colleague, Honorable Manya Ramesh ji, was the author of this AP Reorganization Act. Thank you. At that point of time. Thank you. Thank you. महोदय, 9वीं अनुसूची में के अंतर्गत संस्थान है और इसके निपटारा के लिए एक शिलाभिरेख कमेटी भी बनाई गई थी। 90 संस्थानों के संबंध में शिलाभिरेख कमेटी ने अपनी संस्तुति दी है जो प्राप्त हुआ। तेलंगाना ने 90 में से 68 संस्थानों की सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन आंध्र प्रदेश इन 68 में से 33 संस्थानों पर सहमत है। आंध्र प्रदेश समग्र हल के पक्ष में है, जबकि तेलंगाना केस बाई केस सिफारिश को स्वीकार करने के पक्ष में है। यहाँ कुछ विवाद आते हैं। 10वीं अनुसूची में प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, तो इसके तहत 112 प्रशिक्षण संस्थान केंद्र वर्णित है। धारा 75 के अनुसार इसके विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है और आंध्र प्रदेश इन्हें जनसंख्या के अनुपात में विभाजित करना चाहता है तथा तेलंगाना स्थान के आधार पर। अटॉर्नी जनरल के अनुसार विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी चाहे 10वीं अनुसूची हो, 9वीं अनुसूची हो, चाहे इसके अलावे भी जो भी संस्थान या इकाइयां हो, उसका समाधान के लिए मंत्रालय, गृह मंत्रालय बार बार यहाँ से निर्देश देते हैं कि आपसी सहमति बनाई जाए। आपसी सहमति के आधार पर ही इस पर कुछ निर्णय हो सकता है और हम तो सिर्फ समन्वय का काम करते हैं, हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सुझाव आते हैं या कुछ दोनों राज्यों की तरफ से कुछ बातें आती है तो उसको गृह मंत्रालय कोऑर्डिनेट करके दोनों स्टेट के सामने रखती है। जहां तक मैं इसलिए केंद्र सरकार की जो चिंता है, पुनर्गठन के बाद आंध्र राज्य को 2014 के उपरांत भारत सरकार द्वारा कुल 65,730 करोड़ की राशि जारी की गई और पुनर्गठन के बाद तेलंगाना राज्य को 2,385 करोड़ की राशि जारी की गई, जो विभिन्न संस्थाओं और राजधानी शहर की सहायता, सिंचाई परियोजनाओं से लेकर कई तरह के राजस्व घाटों के अनुदान के मामलों में भी और जो पिछड़े राज्य हैं उसको भी प्रत्येक वर्ष हम उसके विकास के लिए देते हैं। इस प्रकार से प्रयास होता है, लेकिन हम समन्वय का ही काम करते हैं। धन्यवाद। माननीय श्री सीएम रमेश जी, माननीय श्री सीएम रमेश जी, देयर आर अदर वेज फॉर दैट, प्लीज। माननीय सीएम रमेश जी। State has been bifurcated last 8 years back. It is there in the Act, so many issues. These issues now, Telangana state and Andhra, some common properties, public sector undertakings and all. And some money also there is in the deposit in the banks. Recently we have seen in the media, both the chief secretaries, home ministers called and had discussion. Home secretary. And that also, how many issues are there, how many issues has been settled. I am asking the Home Minister has to take initiative. Both the Chief Minister have very good relations. They were discussing their issues. But why Telangana issue, Andhra issues, they have to sit and settle. And every time they are telling we have very good relations. Please. Now I am asking the Government of India, if instead of calling secretaries, both Chief Minister also has to call and settle these issues. Please put your question. Yes, sir. Thank you. सभापति महोदय, काउंसिल की मीटिंग में माननीय गृह मंत्री जी ने भी दोनों राज्यों से यह आग्रह किया है कि दोनों राज्य जो भी विवाद के मुद्दे हैं उसमें आपसी सहमति बनाकर दोनों इस मामले का निपटारा कर लें। कहे कि कुछ चीजों पर निर्णय हुआ, कुछ चीजों पर निर्णय नहीं है और निर्णय दोनों राज्य की सहमति से ही होनी है। तो इनका अच्छा सुझाव है कि दोनों राज्य बैठकर सहमति बना ले और हम लोग भी यही चाहते हैं और बार बार इसका एमएचए के द्वारा प्रयास भी होता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनरेबल श्री विनय विश्वम जी। माननीय मंत्री।
table of the House. First supplementary, Manya Vinay Vishwanji. Sir, I raise a very serious issue which affects the women of this great country. The sexual violence within marriages. Sir, I am very sure that the Minister herself is aware of this fact. In Section 3 of the Domestic Violence Act, it is defined what's a domestic violence. It includes harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse and such abuses. Thank you. Sir, the abuses are taking place even inside the marriages. You have to be brief in your question, Viraj. No, sir. Please. You allowed everybody to take their own time. Please, this is a very serious issue. Please, sir. Sir, when we come to Section 375 of the IPC, the strength and the vitality of this definition is eroded. It says that a Mr. man... Vinay Vishwam, you have to be brief in your question, please. No, in Section 375 of the IPC, when rape is defined, the sexual abuse inside the marriage is exempted. It says that a man has a right to... Please be brief. Right to rape his wife. Please be brief. Sir, I'm very sure of that. Sir, one thing is sure, intercourse is really allowed in the marriage, but consent is very important. When a man, simply because he is you are a very senior member, seasoned member, you know you have to be brief in your question. I am asking the minister that whether the government has taken note of the contradiction between the definitions of Section 3 of the Domestic Violence Act and Section 375 of the IPC. Thank you. At the onset, let me say, to condemn every marriage in this country as a violent marriage and to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this august House. I'm sure that the erudite and senior member knows that Rule 47 of the procedures of the Rajya Sabha disallow for an elaboration on a subject which is currently sub judice. But let me say here reiterate the government's endeavour to protect women in this country in collaboration with state governments. Currently, over 30 helplines are functional in our country, which have assisted over 66 lakh women. Currently, there are 703 one-stop centres which are functional in this country, which have assisted over 5 lakh women. I speak, sir, not only as a member of this Parliament, but also as somebody who has converged efforts with state governments, that protection of women and children in our country are a priority for all. But yet again, let me reiterate, to condemn every marriage in this country as violent is not advisable. Second supplementary. Thank you. Sir, I am very sorry to hear to the minister's Please. No, Put sir. your second supplementary. No, sir. I never meant that all the men are rapists. I never meant it. A woman, a minister, doing this is an insult on the man here. I am a man which never accept that way. Please put your second question. Sir, this is not a place to call every man as a rapist, which I never meant. But a man who raped his wife... I have to take other questions also, Vinayji. No doubt. I have to take other questions also. No, my question is Please that... be brief. No, in the answer, the Honourable Minister, who is a very vibrant minister, she told that they are now waiting the governments of the states to do it. My answer is that, maintained by the respective state governments, the data regarding the violences. Can the minister take initiative to gather those data and have a comprehensive idea at the national level and give it to the Parliament at the earliest opportunity? Thank you. Law and order as a state issue is constitutionally settled. The fact that the Honourable Member suggests to me that I engage with state governments and seek records from them is a suggestion which I hear today,
But can I make a recommendation on behalf of state governments today in this House? I cannot, sir. I am a representative of the Government of India. Thank you. A. Muhammad Abdullah. We are talking about the marital rape and domestic violence. A girl says no means no, whether she is a wife or whoever it may be. No means no. But many women are not aware that the marital violence is also a crime. So they keep quiet, they accept because they are unaware. To create a awareness about this, among the women at the young age itself, will the government conduct any special awareness program in the school and college level? Thank you, sir. Thank you. So under programs of Beti Bachao, Beti Padhao, we have ensured that there is capital support given to every district officer, every state government, to ensure that women, and particularly young girls, are made aware of their constitutional rights and responsibilities. I am sure that the Honourable Member's suggestion is well heard not only in this House, but also by state governments. I would also like to bring to the Honourable Member's attention, sir, that through my endeavours, I have appealed to every Member of Parliament that in the Disha meeting that you undertake under your leadership in your district, you can bring up issues with regards to provision of more and more advocacy of women's rights under your leadership. Thank you. Mani Sushil Kumar Modi ji. Mike. ये जानना चाहता हूं कि यह बात सही है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो जो विवाह की संस्था वो समाप्त हो जाएगी और कब पत्नी ने कंसेंट दिया और कब विड्रॉ किया ये प्रूव करना मुश्किल होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट में सरकार का क्या पक्ष है, वो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के पक्ष में है या उसको इम्यूनिटी प्रदान करने के पक्ष में। मेरा सुझाव है कि इसको इम्यूनिटी प्रदान किया जाना चाहिए, नहीं तो ये जो विवाह की संस्था ये खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। The Honourable Member has constitutionally served his home state very, very effectively, and hence I would be appealing to him to repeat Rule 47. I cannot elaborate on a sub judice matter. However, his opinion, I would like to highlight to him for research purposes, finds a reflection in the 172nd report of the Law Commission and also the Department of Standing Committee related to Home Affairs in the year 2013. Srimati Rajni Patel, Lok Sabha. Srimati Rajni Patel. I am Rajni Patil, sir. I am Rajni Patil. Please, Srimati Rajni Patil, stand corrected, please. सवाल पूछे। सर, मैरिटल रेप जबकि सब जुडिस है, हम इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिल्कुल इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर ये सवाल पूछा है और ये हमारे पुरुष सहकारी ने पूछा है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। मंत्री महोदया ने जवाब दिया है कि 30 हेल्पलाइन पूरे देश में इसके लिए चल रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि क्या 30 हेल्पलाइन उसके लिए ठीक रहेगी, पूरी है, क्योंकि देश की आबादी को देखते हुए 30 हेल्पलाइन बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि ओएससी जो उन्होंने बोली है कि जो अप्रूव हुई है वो 704 जो अप्रूव हुई है वो भी मेरे ख्याल से बहुत कम है पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। और 66 लाख का उन्होंने जो लिखित जवाब दिया है कि 66 लाख कॉल आए हुए हैं। सर, मैं आपको सिर्फ एक आधे सेकंड में बोलूंगी कि हमारे देश में पहले एक एकत्रित हमारी फैमिली रहती थी और परिवार में हमारे कोई ना कोई काउंसलिंग। रजनी जी सवाल प्लीज, 2 सवाल पूछ चुकी। बी ब्रीफ। काउंसलिंग सेंटर्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज काउंसलिंग इस चीज में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कानून तो अपने जगह पे कानून काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार में अभी हमारा न्यूक्लियर फैमिली हुआ है तो न्यूक्लियर फैमिली में काउंसलिंग करने वाला कोई होता नहीं। तो हम क्या मंत्री महोदया कोई ऐसे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या ऐसे कोई प्रावधान है कि जो काउंसलिंग सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाएंगे? धन्यवाद। मैं आदरणीय महोदया को अवगत कराना चाहती हूँ कि 34 हेल्पलाइंस देश भर में
प्रदेश सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जो इस जवाब में उल्लेखित है। साथ ही निश्चित रूप से 700 से ज्यादा कार्यरत है वन स्टॉप सेंटर्स, लेकिन बजट में प्रावधान किया गया है कि जिन जिन जिलों में महिला के खिलाफ क्राइम बढ़ा है, वहां पर एक एडिशनल वन स्टॉप सेंटर हम लोग प्रदेश सरकार के साथ समन्वय में स्थापित करके प्रदेश की बहनों को इस प्रकार का समर्थन देंगे। रजनी जी ने एक विशेष उल्लेख किया काउंसिलिंग के संदर्भ में। मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूं कि लगभग 1.5 साल पहले निमहैंस के साथ समन्वय में संवाद नामक एक हमने कार्यक्रम स्थापित किया, जिसके अंतर्गत बच्चों के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और उनके जो ड्यूटी होल्डर्स हैं उनको ये सुविधा और ये सहायता प्रदान की गई। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को ये सुविधा प्रदान की गई है और निश्चित रूप से हम संकल्पित हैं कि ये सुविधा देश भर में निमहैंस के सौजन्य से महिलाओं को भी हम प्रदान करें। कल ही इसी संदर्भ में टेलीमेडिसिन और टेलीकाउंसलिंग की दृष्टि से बजट में भी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, माननीय राजेंद्र गहलोत जी। माननीय राजेंद्र गहलोत जी। माननीय राजेंद्र गहलोत जी, लोकसभा। माननीय राजेंद्र गहलोत जी, आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोकसभा में हैं तो बैठकर हाथ खड़ा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय। धन्यवाद, धन्यवाद। आप बैठे। माननीय मंत्री जी, प्रति सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय राजेंद्र जी बैठकर ही पहला सवाल पूछें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहूंगा कि अभी तक कितने आवंटन हुए हैं और जो अधूरा काम है कब तक पूरा हो जाएगा। सभापति जी, ये जो आवंटन पूछा गया है और इसलिए ये जो टोटल जो संख्या है लगभग 20 लाख के आसपास है की संख्या है और इससे ये स्पष्ट होता है कि इसकी जो प्रक्रिया है पूरे राजस्थान का पूछा है कि 19,65,367 ये राज्य द्वारा तय किया गया लक्ष्य और इस लक्ष्य के आधार पर स्वीकृत जो मकान हैं उनकी संख्या होती है 17,547 और जो बनाए गए मकान हैं उनकी टोटल जो संख्या है 13,73,831। ऐसे कुल मिलाकर के 69.90% अभी तक के लक्ष्य वहां पर बनाए गए। धन्यवाद। माननीय राजेंद्र जी, दूसरा सवाल, दूसरा सप्लीमेंट्री। महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो आवंटन करना था अभी तक उस लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है और अधूरे काम पड़े हैं। उपभोक्ता जो जिनको आवंटन होने वाला है वो बड़े परेशान हो रहे हैं। सभापति जी, ऐसे समय समय में माननीय सदस्यों को भी दिशा की बैठक में इसकी समीक्षा करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। जहां तक आवंटन का सवाल है, आवंटन जैसे माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो वर्षवार जो हम आवंटन जारी किया है तो स्पष्ट तौर से 18-19 में ये हमने 1396.47 और जहां तक जारी की गई जो निधियां हैं वो 23,340.13 ये निधि ऐसे 18-19 का। जहां तक 19 और 20 का सवाल है इसी प्रकार से 3,245.87 और जो जारी की गई जो निधि है वह है 2,333.34। ये हमारा 19-20 का है और 20 और 21 का है 3,1109.80 और 11,008.59 ये जारी की गई निधियां हैं और ये स्पष्ट तौर से इस पे दिया गया है। श्री राम कुमार वर्मा जी। किस क्वेश्चन का? धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय उपसभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना से ये इसमें दोहराई नहीं है कि करोड़ों लोगों को, गरीबों को लाभ मिला है। मैं इस संबंध में राजस्थान प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि जब ये स्कीम लागू हुई गरीबों को करोड़ों में लाभ भी मिला,
लेकिन उसमें सेंसस 2011 को आधार ज्यादातर माना गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा सर्वे भी किया गया। जो लोग उस समय उस लिस्ट में नहीं आए थे और जो एक्चुअल में गरीब थे, जिनको आवास देना था, उनके बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहिए? सभापति जी, ये 2011 का जो सेंसस है और जो उसमें सर्वे हुए, उस सर्वे के आधार पर जो लिस्ट जारी हुई, प्रकाशित हुई, और उस 2011 के बाद हम आवासों का आवंटन करते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा बीच में जो सर्वे किया गया, वो आवास प्लस की सूची, वो आने वाले समय में आवास प्लस की व्यवस्था भी है, और इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो सूची में है वो कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। हम सभी लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का हमारा निर्णय है सरकार का। धन्यवाद। श्री नीरज डांगी जी। जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो सांसदों द्वारा चयनित सांसद आदर्श ग्रामों में राजस्थान में कितने लाभार्थियों को इस योजना का अब तक लाभ मिल चुका है, और क्या पृथक से कोई सर्वे भी इस तरह का कुछ किया है इस योजना के तहत? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था जो की गई 2016 में, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से लिया गया। 2.95 करोड़ उसका लक्ष्य था और उस लक्ष्य को राज्यों को दिया गया। फिर राज्यों ने कहा कि कुछ इसमें पात्र अपात्र आ गए हैं, तो वो फिर करके तब तक यहां कैबिनेट से 2.95 करोड़ आदर्श ग्राम के लिए कोई व्यवस्थित लक्ष्य नहीं है। राज्य सरकार उस सूची में अगर है तो वो जाएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8, ऑनरेबल श्री एमबी श्रेयांश कुमार। ऑनरेबल एमबी श्रेयांश कुमार, नॉट प्रेजेंट, नो सप्लीमेंट्री। ऑनरेबल मिनिस्टर। जवाब पटल पर रखा है सर। डॉक्टर फौजिया खान, डॉक्टर फौजिया खान फ्रॉम लोक सभा, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। Sir, I would like to ask the Minister, Honorable Minister, that national highways have always been constructed keeping excellence and quality in mind. But in many places, it's been noticed that contractors and the government employees, hand in hand, have given a lot of scope to corruption. The MOT specifications are not adhered to at all. One instance about which I had given a complaint also to Honorable Minister is about road number 752K from Gangakhed to Parbhani, which has developed traverse and longitudinal cracks all through the road, and every official seems to be in connivance. Nothing has been done. Again and again I am writing to the government. I have also written to you, Honorable Minister. Thank you. But how can we allow this kind of, irresponsible use of public money? Thank you. You have put your question, Dr. Fauji. Going to be doing about it, sir. Thank you. Maanniya Mantri. Adhyaksh Mahoday, the question is only limited to Char Dham Yojana. Yes. But the question is from Maharashtra, and that any state PWD is responsible executive agency for that. Already the honorable member has given me the complaint about the quality of this project. I will look into it again and I will verify the things and I will report that. Thank you. No other supplementary. Question number 9, Shri GVL Narasimha Rao. 9. माननीय मंत्री जी। सर, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। योर फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को
शिक्षित किया गया। आउट ऑफ 91 lakhs इन द एंटायर कंट्री 12.63 लाख केवल उत्तर प्रदेश से हैं। और मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो लोग शिक्षित किए गए वो कितने लोगों को यहाँ रोजगार का अवसर मिला है उत्तर प्रदेश में, और अवसर और बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। सर मैं धन्यवाद देता हूँ। क्वेश्चन आवर इज ओवर। Namaskar, hello and welcome to SANSAD TV. I am Tina Jha. You're watching House Highlights, where we'll take you through the day's proceedings in both houses of Parliament. First, the headlines. Parliament takes up discussion on the motion of thanks on the President's address. BJP leaders Geeta Shakya moves motion in the Rajya Sabha, Harish Dwivedi in Lok Sabha. Discussion on motion of thanks opens in both houses, with BJP leaders welcoming government policies, paving way for an inclusive and progressive new India. Opposition parties raise farmers' issues, question government on inflation and job creation. During question hour in Lok Sabha, Commerce and Industries Minister Piyush Goyal tells House that PLI scheme aimed at creating global champions and creating FDAs with more countries. And during zero hour in Rajya Sabha, members asked government to examine allegations of irregularities in the railways, non-technical popular categories and level 1 exams. Two days after President Ramnath Kovind spelled out the roadmap of the Narendra Modi government, the upper house took up the discussion on the motion of thanks on the President's address. BJP member Geeta Shakya moved the motion. Member Shwet Malik seconded it. Welcoming the policies of the government, they said it had paved way for inclusive and progressive new India. Floor leaders of the Trinamool Congress, the Samajwadi Party and the DMK also took part in the motion of thanks discussion in the upper house. Listen in. प्रधानमंत्री जी ने देश के पिछड़े समाज के हितों को देखते हुए संवैधानिक संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। इसके लिए उनका हृदय से मैं धन्यवाद देती हूं। अनुच्छेद 342A के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में व्यवस्था की गई है। आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनुच्छेद 366(26) के जरिए राष्ट्रीय आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके लिए इन व्यवस्थाओं के कारण देश केंद्र के साथ साथ अब राज्यों में भी ओबीसी वर्ग को उनके अधिकारों को प्राप्त हो रहे हैं। चेयरमैन सर, जो एम्स है, आईआईटी है, आईएम है, ये हमारे उच्च शिक्षा संस्थान है जहां से देश का विकास हो रहा है, जहां से देश विकसित हो रहा है। आज पंजाब को 70 वर्ष के बाद पहली बार अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मोदी जी ने दिया। आज बठिंडा में पहली बार 70 वर्ष के इनके कुशासन के बाद एम्स जो है वो बठिंडा को मोदी जी ने दिया है। आज आईआईटी पंजाब को पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब को मोदी जी ने दी है।
आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली बार पंजाब को मोदी जी ने दी है। एक्सप्रेस हाईवे अमृतसर दिल्ली और कटरा एक्सप्रेस हाईवे, ये कैसे तीर्थ स्थल गुरु नगरी और वैष्णो मां का जो द्वारा है उसको एक्सप्रेस हाईवे को मंजूरी दी है, जिससे अमृतसर से दिल्ली की दूरी केवल 4 घंटे रह जाएगी। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मिलने वाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो तो छोड़िए, अरे आपकी बारी आएंगे तो बोलो बार बार मत मुझे छेड़ो, मैं भी उतना ही गंभीर लेता हूं। सर, महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। और आज मैं ये कहूंगा कि जो मेरे पास हिसाब है उसके अनुसार भारत सरकार में करीब 9 लाख नौकरियां यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इलाके मिलके पद खाली है। Has not addressed this growing problem of attack on time-tested institutions and authorities. Sir, in the name of economic reforms, the government has emerged as a Vikreta Sarkar, a seller's government, in as much as it has decided to sell out almost all public properties. These are PSU banks, insurance companies, and even profit-making public sector enterprises. Sir, PSU banks earned net profit of rupees 31,820 crores in 1 year, that is last fiscal 2020-2021, which is the highest in last 5 years. Sir, yet government wants to sell PSU banks to private sector, for which Banking Nationalization Amendment Act is reportedly in the offing. अगर 100 वोट होंगे तो 1000 वोट डालेंगे वो दूसरों के, और उससे सीखना ही नहीं चाहते कुछ भी। यानी पूरे देश में अब कोई अपनी नीतियों के लिए बात नहीं हो रही है, गालियां दी जा रही है, गुंडों की बात ही है, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है? कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं सदन के माध्यम से कहता हूं, The producer, see, basically 80% of the country are basically agriculturists. During the economic recession, India survived only because of two things. One is public sector and the other is agriculture sector. Even during the COVID pandemic, India had food sufficiency because of our agriculture, but you are killing it. So also the public sector. See, you are giving 5G to the private sectors, but not 4G, even 4G to BSNL and MTNL. It is a silent way of killing the public sector, BSNL and MTNL. So everyone would migrate from BSNL to the private sector when they are, of course, when everyone is living in a digital world, we are for 5G, whereas they are not even able to provide 4G. They have enough infrastructure. The infrastructure of the BSNL is being utilized by other private networks. Now we have already seen there are international reports which does not get any reflection in the president's deliberation. International report says that inequality in India has increased, widened up much during this period. More than 50% of the world's poor people belong to India. How do you address this? What is your scheme?
How do you think that we can really recover these people and bring them above the poverty line? There are countries in the world who have been successful to bring all people above the poverty line, which you have no scheme to speak of. 80% of the Indian household has suffered income loss. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu has urged members of Parliament to ensure a productive budget session. Chairman Naidu highlighted the significance of the first Parliament session in a calendar year that marks the historic 75th year of India's independence, as well as 70 years of electoral journey of free India. The chairman urged all sections to ensure the best performance for the upper house. In fact, he also reminded members that the budget session had seen 93.5% productivity last year. The first in this historic year, this August House has lost 52.10% of the valuable sitting time due to disruptions and forced adjournments. During the preceding monsoon session last year, the loss of functional time of this House was as high as 70.40%. This trend of disruption is highly disturbing. I refer to the same with fervent hope that we all reflect on the same and conduct ourselves in a manner befitting the historic time that we are passing through. During the last 70 years of election, the voter turnout has increased from 45% in the elections to the first Lok Sabha to over the highest ever, over 67% in the 17th elections in 2019. This marks an increase of 50% in voters' participation. The voter turn in polls to the state assemblies is even higher. This goes to prove that citizens of our country continue to impose their faith in democracy. In this historic year, the need of the hour is for the 5,000 MPs, MLAs and MLCs to resolve to return to the people the favor they have been relentlessly doing by nurturing our democracy. The only way of doing so is to conduct ourselves in a manner befitting the trust the citizens still have in our parliamentary democracy. Having said so, I would like to remind that this budget session last year, the House clocked a productivity of 93.50%. The spirit of occasion demands that this House turns out the best performance during the important budget session. Honourable members, this is the 6th session being held since the outbreak of COVID pandemic. Given the highly infectious nature of the variant of corona virus during the current third wave, both the houses are meeting in shifts, first adopted during the monsoon session of 2020. Members of the upper house joined the chairman in condoling the deaths and expressing sympathy for the victims of flood calamities in Malaysia and also the Kingdom of Tonga. Several parts of Malaysia, remember, were hit by a severe flood calamity last December, while the island Kingdom of Tonga had a massive underwater volcanic eruption last month. It triggered 1.2 to 1.5 meter high tsunami waves, flooding the Tongan capital. The upper house reiterated India's stand of solidarity with the victims of the tragedies. Malaysia was hit by severe torrential rains, causing severe flood calamity in several parts of the country. This was one of the most devastating floods in 100 years in Malaysia. Over 70,000 people were displaced from their homes and 50 people have reportedly lost their lives. The unprecedented floods wreaked extensive damage to the property and livelihood of the people. A massive underwater volcanic eruption near the Tongan capital of Nuku Alofa triggered 1.2 to 1.5 meters high tsunami waves, causing flooding in the island Kingdom of Tonga. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the losses suffered by the people of Malaysia and the Kingdom of Tonga and reiterate India's stand of solidarity with them. I request the members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in these tragic incidents. And issues of public importance were raised in the Rajya Sabha during the 0 hour.
Rajya Sabha members asked the government to examine allegations of irregularities in the railways non-technical popular categories and level 1 exams that led to violence in Bihar and parts of Uttar Pradesh last month. Issue of unemployment, particularly in Bihar, must be looked at, and the irregularities that are alleged by the students in this examination must be examined and corrected. NTPC जो 35,000 सीट्स हैं उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए. 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है, तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, it is actually only 3,50,000. So I appeal the railway ministry to announce another 3,50,000 results of the students so they can appear in the exam. And time for a short break here. We'll be right back. Do stay with us. What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Baru, only on SANSAD TV. Welcome back. You're watching House Highlights. In the Lok Sabha, the motion of thanks on the President's address was moved by BJP MP Harish Dwivedi and seconded by member Kamlesh Paswan. Congress leader Rahul Gandhi initiated the discussion for the opposition. Listening. मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो सेंट्रल हॉल में संयुक्त सदन में उन्होंने संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कहा था कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के चलेगी और उस पर काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित हमारी सरकार होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था नौजवान, माताओं, बहनों को समर्पित हमारी सरकार होगी। लेकिन शायद उस समय हम लोगों के ध्यान में भी नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। और उस समय सबका साथ सबका विकास का जब नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया तो तमाम विपक्ष के नेताओं ने हंसी करने का काम किया। लेकिन सबका साथ सबका विकास होता क्या है, गरीबों मजदूरों को समर्पित सरकार होती क्या है, इसका उदाहरण जब धीरे धीरे हमारी सरकार काम करना शुरू की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हिंदुस्तान में हर गरीब के घर तक हम बिजली की रोशनी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने केवल कहा नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना करके हर गांव तक खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया, जो शायद 20, 25, 30 साल पहले मिल जाना चाहिए था। गरीबों का हक था। सरकारें गरीबों के लिए होती है, सरकारें अमीरों के लिए नहीं होती हैं। गरीबों को हर प्रकार का अधिकार मिल जाए, हर प्रकार की सुविधा मिल जाए, इसके लिए सरकारें होती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर गांव तक खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाया। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाने से केवल गरीबों के घर में रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो गरीबों के घर में सौभाग्य योजना बना करके करोड़ों गरीबों के घर में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और मीटर देने का काम मोदी सरकार ने किया। और इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने हर गरीब की चिंता की। गरीब के घर में भी बिजली की रोशनी पहुंचनी चाहिए, गरीब के बच्चे को भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए। महात्मा गांधी जी जब बनारस गए थे स्वच्छता की बात किए थे, और स्वच्छता की बात जब किए थे तो उन्हीं के कांग्रेस के साथी लोगों ने उनका उपवास उड़ाने का काम किया था। और उसके बाद किसी ने स्वच्छता की बात की तो हम लोग के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की, सभापति महोदय। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उस समय भी हमारे साथी, संसद के साथियों, चाहे क्षेत्र में जब हम लोग गए स्वच्छता अभियान को चालू करने के लिए, तो हमारे मित्र ही सांसद सेंट्रल हॉल में कहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तुम लोगों को झाड़ू थमा दिए। हम लोगों का भी उपहास करने का प्रयास किया अध्यक्ष, सभापति महोदय। लेकिन जब हम लोग क्षेत्रों में गए, चाहे सांसद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे स्वयं समूह हो,
चाहे अन्य समूह लोगों ने मिलकर, किसी ने तालाब की सफाई करने का प्रयास किया, किसी ने रोडों को सफाई करने का प्रयास किया, हॉस्पिटल की सफाई करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वहीं तक ये सीमित नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर पूरे देश में जो क्रांति लानी है वो तभी संभव हो पाएगी जब इसको हम गांव तक इसको लेकर जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसको काफी हद तक सफल भी पाया। और कौन लोग हैं ये? समाज के जो सबसे दलित, वंचित, पिछड़ित व्यक्ति है, उनको कैसे मदद किया जाए, ये अगर जो किसी से सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख। असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन आवर पीपल इज नॉट टेकिंग प्लेस। Our institutions are under attack and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. This is the points pronounced by the President of India in the floor of Central Hall, sir. What has happened, sir? What has happened? This is not new to India. So even in IAS examination, even today, the people are writing in their own languages. But as if it is a new to the House or new to the parliamentarians, he said, President has said, he is going to bring the languages in the competitive examination. That is not proper. It has been involved for many years. So even in the railways and this postal examination, 2 to 3 years back, what has happened? It was denied. The same government which is now coming forward through the election, this president's speech, that he will, they are going to bring the languages once again. They said they denied the opportunity of conducting examination in the local languages, in postal and as well as railway. But finally, only the administrative ministers interfered and they have done it. They brought back the languages once again, sir. But DMK, because of the DMK agitation in both the houses of the parliament, inside the parliament, outside the parliament, this has happened. They have given the opportunity rights, the competitive examination in their languages, sir.
Sir, I rise to speak on the motion of thanks on the President's address, and I oppose the motion of thanks and support all the amendments which I brought on this motion of thanks. Unfortunately, all the members of AITC, they are away in Calcutta, where our chairman's election today. Only our colleague Mahua Moitro will speak tomorrow, is here. But it doesn't matter. I speak with the courage of conviction. And what I want to say is that this government has given a series of what it has done. But it's the same thing. Ayushman Bharat, PM Garib Kalyan Anna Yojana, PM Awas Yojana, Jal Jeevan, PM Kisan Samman Nidhi, SHG, Ujjala, in which they gave 3 cylinders which have run out, GST, etc. Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan, ordnance factories, etc., etc. There is nothing new, unfortunately, in the President's speech. And earlier, as soon as the lower house assembled for the day, members from various parties, including the Congress, DMK, the BJP and the Shiv Sena, raised several issues of public importance during the question hour. Let's take a look. ये जो मेक इन इंडिया की बात होती है, स्वदेशी की, विदेश से पैसा ले जाते हैं और स्वदेशी की बात किया जाते हैं. हमारी ब्रांड वैल्यू पता नहीं. विदेश से जब पैसा आएंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम बेचेंगे विदेशी मार्केट में. अभी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहे हैं, सारे दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रहे हैं. इस हालत में आप ये 25% जीडीपी पहुंचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनुअल कितना ग्रोथ होना चाहिए और ये ग्रोथ होने के लिए आपका रोड मैप क्या है? जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की आपने विषय बताया, वास्तव में तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको अंतर्ग्रह में देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया जिसके कारण भारत में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये बुरी दुर्दशा हुई. हमारी तरफ से मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग योजनाएं लाए. अभी पीएलआई की स्कीम के बारे में बड़े विस्तार से बजट में भी बताया गया. 14 सेक्टर्स में लगभग 2 लाख करोड़, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 76,000 करोड़. इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि भारत में ग्लोबल चैंपियंस बने. माननीय वित्त मंत्री ने अभी अभी बताया कि किस प्रकार से पीएलआई स्कीम्स आने से लगभग 30 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की वृद्धि भारत में होने का अनुमान है. तो मैं समझता हूं कि ये सरकार प्रतिबद्ध है भारत की मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाने के लिए. From the Honorable Minister, that whether it is a fact that there are about 19 departmental post offices in West Bengal are not yet computerized and migrated to CBS. If so, the details thereof and the reasons therefore and the steps taken proposed to be taken in this regard. जैसे माननीय मंत्री जी ने पूछा है, माननीय सांसद जी ने, रिमेनिंग 19 पोस्ट ऑफिस जो बाकी है वो हम फेज मैनर में कर रहे हैं. Okay, thank you. That's it from us in this bulletin. Thanks very much for your time.
नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं संसद की सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। राज्यसभा में बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा और लोकसभा में हरीश